सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना माइक्रोफोन प्लीज म्यूट कर लें। हमारे आज के प्रथम सत्र के वक्ता सरस्वती पुत्र श्री अंकित जी आ गए, पधार चुके हैं, तो मैं उनका उद्बोधन प्रारंभ कर रहे हैं। रिक्वेस्ट करूंगा प्रारंभ कराने के लिए। पहले गायत्री मंत्र का जाप कर लेते हैं, उसके बाद सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना माइक्रोफोन म्यूट रखें, और फिर संजय अंकित जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना उद्बोधन प्रारंभ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। थैंक यू एवरीवन। अंकित सर अपना स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद सर। आज की वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। और कल बसंत पंचमी है, सरस्वती माता का दिन है, तो आज बसंत पंचमी की पूर्व संध्या पर सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सरस्वती माता की कृपा हम सब पर ऐसे बनी रहे और हम सब ज्ञान आपस में ऐसे बांटते रहे। धन्यवाद आपको भी अंकित जी, सभी मेंबर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। शैलेश सर नोटिस आप शेयर कर दीजिए ताकि चेक कर लें सर। अनम्यूट कीजिए सर अपने। नोटिस शेयर कर दूं? पहले शिवमंगल जी का जो प्रश्न था वो जवाब दे दीजिए जब तक मैं देखता हूँ। जी सर, जी जी जी। शिवमंगल जी अपने आप को अनम्यूट करके अपना पहले सवाल पूछ लीजिए। शिवमंगल सिंह चौहान साहब, होशंगाबाद। नहीं सर, शिव गोपाल सर का था कोई क्वेरी। शिव गोपाल जी का, शिव गोपाल उत्तर जी। जी जी। राम सर। शिव गोपाल जी बोलिए। अंकित भैया, मैं ये कह रहा था कि अभी एक आया है कि GSTR 1 में हमको RCM की लायबिलिटी दिखानी है और उसके लिए बिलिंग करनी है। जो रेंट ऑफ राइट पे हम लोग बिलिंग करेंगे जी। तो उसकी बिलिंग में एक तो बात, उसकी बिलिंग में क्या क्या डिटेल लिखेंगे। दूसरी चीज ये है कि हम CV में जो ऑटो पॉपुलेटेड हमारी लायबिलिटी आ जाएगी उसमें हम कोई चीज चेंज नहीं कर सकते। ऑटोमेटिक आएगी, ऑटोमेटिक हमको खाली रिटर्न पाएगी। इस विषय में थोड़ा सा आप बता दें कैसे हमें RCM का बिल जारी करना है और कैसे उसको रिपोर्टिंग करनी है। सर जब से GST लगा है RCM तभी से है। कुछ चीजों पे था, कुछ पे नहीं था, तो लेकिन RCM की इनवॉइस तब भी जनरेट करनी थी और अभी भी जनरेट करनी है। RCM की इनवॉइस का प्रोसीजर सेम जो आपका टैक्स इनवॉइस का प्रोसीजर होता है, सेम वही प्रोसीजर होता है। उसमें टैक्स हमें खुद जमा करना होता है और RCM यस होता है, क्योंकि RCM हम खुद जमा करेंगे तो उसमें अपने नाम से ही RCM इनवॉइस जनरेट होती है। हम के नाम से हो जाएगी। हाँ जी, जैसे परचेज इनवॉइस होती, जैसे परचेज इनवॉइस होती है इस तरीके से RCM इनवॉइस क्रिएट होगी सर। तो परचेज की जहाँ परचेजर की वहाँ अपने फर्म का नाम लिखेंगे? नहीं सर, जो सेलर का नाम लिखते हैं ना, जैसे जब हम सेल का बिल काटते हैं तो वहां पर परचेजर का नाम लिखा जाता है, लेकिन जब हम अपने लिए इनवॉइस काटेंगे तो फिर वहां पे सेलर का नाम लिखा जाएगा। और डिटेल में नीचे RCM, डिटेल में RCM की डिटेल आएगी जो हमें टैक्स खुद जमा करना है। जो इसको पेड अमाउंट होगी वो टैक्स से पहले वाली अमाउंट होगी। जिससे हम परचेज कर रहे हैं उसकी जो अमाउंट होगी पेड अमाउंट, वो टैक्स से पहले वाली अमाउंट आएगी। मैं फ्राइट उसकी बात कर रहा हूँ सर, रेंट। जी सर, फ्राइट और हाँ रेंट जी, की मैं चाहे बात कर रहा हूँ। किसी भी चीज का हो सर, RCM की इनवॉइस तो जो भी होंगी वो सारी एंट्री होंगी, चाहे वो फ्रेट का हो, रेंट का हो, या आपका मेटल स्क्रैप में अनरजिस्टर्ड परचेज पर जो है, तो उन सारी चीजों के लिए आपका लीगल फीस है,
तो किसी भी चीज़ पे जहाँ पर भी आपकी आरसीएम की लाइबिलिटी है, तो उसकी सारी आपको इनवॉइस जो आपने क्रिएट की हुई है उनको बस GST-1 में आपको शो करना होगा। उसका ऑप्शन आएगा भी, GST-1 में भी उसका ऑप्शन नहीं आया। और जब उसका ऑप्शन आ जाएगा उसके बाद आपका 3B ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी, उसमें कुछ भी आप चेंज नहीं कर पाएंगे। 1A जी जी। इसीलिए लाया गया है कि पहले आप 1 में, GST-1 में आप अपनी लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे, अगर फिर भी आपको कोई उसमें करेक्शन है तो 1A से करेक्शन करेंगे, उसके बाद आपकी 3B जनरेट होगी। तो इसमें जो अमाउंट होगा हमारा, तो खाली आरसीएम का अमाउंट होगा। सपोज कीजिए मैंने 1 लाख रुपए में आरसीएम का अमाउंट करना है, तो एक हाँ लाख जी रुपए लिख के उसपे 5% या 18% जो भी होगा जी जी अमाउंट, जी वो जी। खाली वो वही टैक्स जैसे का अमाउंट। सेम इनवॉइस का ही प्रोसीजर है सर, जैसे इनवॉइस इशू होती है सेल की, ऐसी इनवॉइस आरसीएम की। नहीं तो आरसीएम के अमाउंट कैसा फाइनल उसमें लिखना पड़ेगा, ये मैं जानना चाह रहा हाँ जी, लिखना हूँ। पड़ेगा। तभी आप उसकी एंट्री करोगे ना, तभी वो आपकी आउटपुट लाइबिलिटी में क्रिएट होगा, तभी वो, क्योंकि जब तक आप उसमें शो नहीं करोगे कैसे पता चलेगा आपने कितने परसेंट वाली अमाउंट। वापस आ गई, पहले वाली वापस आ गई। भाई आपका मतलब 10,000। 5% का आरसीएम है, आपका 18% का आरसीएम है, वो तो जब आप उसमें टैक्स अमाउंट खोलोगे तभी पता चलेगा ना सर। नेट टैक्स अमाउंट तो खोलेंगे सर, मैं पूछ रहा हूँ जैसे कि हमने 10,000 रुपये आरसीएम में फ्लाइट में दिया, तो जो हाँ बिल जी अमाउंट होगा आराम तो 10,500 होगा कि खाली 500 जी। रुपये होगा? नहीं सर, 10,500 का ही होगा। 10,000 दस आपने हजार पेड पाँच कर सौ दिया उन्हें, और 500 उसमें 500 रुपये का वो आरसीएम में। आरसीएम जी। अभी अभी ये कॉलम खुला नहीं है सर उसमें? अभी अभी कॉलम नहीं आया सर ये। तो जनवरी की रिटर्न पे ऐसे ही चली जाएगी जैसे जाती थी हाँ जी, अभी तक तो। जनवरी। बाकी अभी 1-2 दिन में पोर्टल पे जब रिटर्न फाइल करेंगे तो पता लग जाएगा कुछ उन्होंने चेंज किया, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा नोटिफिकेशन आया नहीं। गुप्ता जी, अभी तो जैसे आप जब 3B फाइल करते हैं तो उसमें आरसीएम की अलग से फिगर डालनी पड़ती है। जो जी जी ऑप्शन है उसी की तरह मैन्युअली ही डालेंगे आप जब तक नहीं आता पोर्टल पर। जी। वहां पर जहां 3B में आउटपुट लाइबिलिटीज के अंदर आप उस फिगर को डालते हैं और सेकंड आईटीसी में उसको आप रिक्लेम कर लेते हैं, वैसे ही प्रोसीजर अभी रहेगा जब तक नहीं आता पोर्टल पर चेंज। ठीक सर। ओके। वो सर आगे जब आएगा तो वैसे ही आ जाएगा कि जैसे आरसीएम के रिवर्स चार्जेस वाला ऑप्शन आएगा, वहां पर आपको वो कॉलम टिक करना पड़ेगा। आपको डिटेल्स देनी पड़ेगी एचएसएन वाइज। यदि रेंट का हो तो रेंट की सर्विसेज का एचएसएन डालना पड़ेगा कोड। जीटीए की सर्विसेज होगी तो जीटीए का डालना पड़ेगा, 5% है, रेंट का 18% है जैसे। या जो आप मेटल स्क्रैप है तो उसका अलग डालना पड़ेगा, और वहां पर जो रिवर्स चार्ज का कॉलम है उसे टिक करना पड़ेगा। जब भी यदि फ्यूचर में जो चेंज होंगे आपके R1 के अंदर, वहां पर यही कॉलम आएगा, वहां पे आपको टिक करना पड़ेगा। तो आपकी ऑटोमेटिकली 3B की लाइबिलिटी के अंदर आ जाएगा, रिवर्स चार्ज लाइबिलिटी में। जी जी। अंकित जी सही कह रहा हूँ लगभग? सर इसमें ना रिवर्स चार्ज वाले में यस नो का थोड़ा सा वो देखना पड़ेगा, क्योंकि रिवर्स चार्ज यस तब होता है जब सामने वाले को पे करना होता है, जब हमें नहीं तो खुद हम पे हम करना होगा। नहीं तो हम अपनी आउटपुट लाइबिलिटी में यदि करेंगे, हम अपनी आउटपुट लाइबिलिटी में तो दिखाई नहीं पाएंगे ना उसको। मैंने सप्लाई थोड़ी नहीं हम की। नहीं सप्लाई नहीं की, लेकिन GST-1 में जब उसका अलग से कॉलम क्रिएट होगा तो हालांकि उसकी पूरी एप्लीकेबिलिटी डिटेल तो तभी आएगी। एप्लीकेबिलिटी आएगी हमारे ऊपर, यदि टैक्स लाइबिलिटी हाँ की जी, एप्लीकेबिलिटी तभी तो आएगी ना कि जब हम एप्लीकेबल आरसीएम ऑप्शन ऑन करेंगे। रिवर्स आरसीएम चार्ज का। हमारे ऊपर है। नहीं सर, उसमें आरसीएम यस नो वाला कॉलम नहीं आएगा जहां तक मैं मानता हूँ। अच्छा, नहीं तो फिर जी हमें सर। कैसे हम एप्लीकेबिलिटी अपने ऊपर लेंगे उसको? सर वो तो क्योंकि हमारा एक तरीके से परचेज इनवॉइस होगी ना, आरसीएम इनवॉइस अगर हो गई तो वो उसके लिए कॉलम इसीलिए आ गया कि हमारी ओन लाइबिलिटी आ गई, क्योंकि जहाँ पे भी हम आरसीएम यस करते हैं तो जिसका जीएसटी नंबर डालते हैं उसके ऊपर लाइबिलिटी बिल, क्रिएट हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल वही बात मैं आपसे कहना चाह रहा तो हूँ कि लाइबिलिटी उसमें उसकी ही जीएसटी आएगी। नंबर हमारा हमारा तो आएगा नहीं, जीएसटी नंबर जब हम उसकी डिटेल आएगी, हालांकि जब कॉलम आएंगे डिटेल तो तभी पता चलेगी। जी जी जी। अंकित सर, अंकित जी जी, जी जो संजय सर कह रहे हैं वो चूंकि जब हमारी सप्लाई कोई आउटवर्ड सप्लाई आरसीएम में होती है, मतलब कि हम सप्लाई दे रहे हैं लेकिन सामने वाला रिवर्स चार्ज में पे कर रहा,
तब वो कॉलम हम यूज करते हैं जो GSTR 1 में है, टिक करने का कि यस सामने वाले जी की लाइबिलिटी है। लेकिन जी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मेटल स्क्रैप का केस हो, या जैसे हम GTA की सर्विस लेते हैं या किसी एडवोकेट की सर्विस लेते हैं, उसमें जी। सेल्फ इनवाइस जो जनरेट हम कर रहे हैं, उसको वहां पे जो 3B में हमें सेल्फ डिक्लेरेशन जैसा अभी भी जा रहा ना, जैसे हाँ अपन जी हाँ जी। GTA सर्विस भाड़े का जो पे करते हैं, जी 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 सेम वैसे ही करना पड़ेगा। उसमें कोई अदर मेटल स्क्रैप के लिए कोई कॉलम नहीं आएगा। और सेम हम अपनी ITC क्लेम भी कर लें रिवर्स चार्ज में, वही पैटर्न रहने वाला है, उसमें चेंज नहीं करेंगे वो के मेटल स्क्रैप के लिए करें। अब रंजी, चूंकि ये आपने जो जो बेसिकली जो बात आ रही है कि जो ऑटो जनरेट की बात आ रही है ना 3B की, अभी तक क्या होता है कि हम RCM वाले कॉलम में मैनुअली फीड करते हैं जी और दोनों जगह मैनुअली करते हैं। अब जो अभी गुप्ता जी का क्वेश्चन था कि कभी ऑटो पॉपुलेटेड होगा, हम्म। उस कंडीशन में कैसे बनेगा? हाँ संजय सर, ऑटो पॉपुलेटेड जो RCM की लाइबिलिटी जो हम सेल्फ डिक्लेयर कर रहे हैं वो नहीं होगी, वो हम हमें 3B में वहीं पर डालना पड़ेगी। तो या तो उसके लिए ऑटो में यस सर। हमेशा मैनुअली रहेगा हमारी एंट्री, हाँ मैनुअली रिवर्स नहीं, सेटलमेंट भी हमेशा मैनुअली रहेगी। हाँ मैनुअली ही रहेगी बस वो उसमें। और ITC हम स्टेटमेंट जो आ रहा है वही रहेगा, जो और आता है फॉरवर्ड चार्ज में, उससे जो जनरेट होकर आएगी 3B। सर हो सकता है कि GSTR 1 में उसका कोई कॉलम एडिट कर दें। सर नहीं अगर तो उन्हें हमने ऐसा, की हमारी अंकित जी अगर आउटवर्ड उन्हें करना सप्लाईजन होता, कैसे ले लेंगे? अगर उन्हें करना होता ना अंकित जी, तो वो तो फिर बाकी सर्विस से जो RCM में हैं उसमें उनके भी लिए करते भी हैं। वो कर देते, वो तो वो कर देते, वो करेंगे तो तो सब पे उनको। ही करेंगे। करेंगे तो सब पे ही करेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उस पे नहीं करेंगे। मतलब वो इसलिए तो तो मैं जब कह रहा हूँ कि वो उनका उसमें है नहीं फंडा, वो सेल्फ डिक्लेरेशन वाला जो फंडा है वो 3B में जाके हम डिक्लेयर कर दें और ITC क्लेम कर लें। आउटवर्ड सप्लाई अगर हमारी कोई RCM में है जो सामने वाला पे करना है जिसको, वो तो उनने दे दिया GSTR 1 में, ताकि वहां पे रिफ्लेक्ट होके उसके 3B में ऑटो पॉपुलेटेड RCM में फिल होके आ जाएगा। उसको इतनी तो कंपलसरी पे करनी ही करनी है RCM में, क्योंकि आउटवर्ड सप्लाई में जब डाल देते हैं तो वहां सामने वाले के RCM में पहुंच जाती है ना सर? चलो कोई नहीं, संजय सर अभी मैं तो सही जब कह रहा हूँ ना? जब GSTR 1 में आएगा तब देखते हैं उसे क्या हाँ चाहता सर। है। चलिए सर, आप बताइए सर हाँ, क्वेरीज। तो हमारी इंक्वायरी आपके सामने दिख रही है। ये पॉइंट नंबर 12 पर अपन डिस्कशन करें। जी लिखा फर्दर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्क्रूटनी ऑफ GST रिटर्न of the notice forms are 3B and 2A जी on the one of the period April 20 to March 21. It is noticed that there is difference of rupees 16 lakh 56,026 rupees between ITC available in GSTR 2A and ITC available and utilized in GSTR 3B. तो जी यहाँ पर मेरा ये कहना है कि जो 2A था वो केवल देखने के लिए था, ना कि उसके हिसाब से ITC लेने के लिए। मेरा ऐसा जी मानना उस संबंधित पीरियड में। और उसी जी। संबंध में बीच में शायद DS 2A को रोक के 2B लाए थे। सर 2B 1 जनवरी 22 से आया था सर, ये March 21 तक का है। हाँ, ये March 21 तक का है। तो 2A को जो हमने बड़ी भाषा पढ़ी उसमें ये लिखा है कि 2A से आप सिर्फ देखिए कि बिल आपके दिख रहा है अथवा नहीं दिख रहा है। उसके हिसाब से ITC लेना या ना लेना कंपलसेट था या नहीं था, मेरे ख्याल से ये नहीं, ऐसा नहीं था। जी सही है भाई। है ना? तो इसमें अब परसेंटेज थी सर कि आप 10% 36 एक्स्ट्रा ले तब सकते सर हैं वो इसमें। रूल 36(4) एप्लीकेबल हो चुका था 19-20 से, कि वो 5% 10% का जो था ना शुरू में, सबसे पहले 20 था, फिर 20 था, 20 फिर से 10 15 हुआ हुआ, था। फिर 10 हुआ, फिर 5 हुआ। नहीं, जी जो 2A की लाइबिलिटी है उसके हिसाब से 20 10 5 था, या जो हमारे पास बैलेंस के हिसाब से हम ले सकते थे। सर मेरा, 2A। चले सर आज की डेट में 2A क्या बोल रहा है आपका? उतना ही बोल रहा है जितना आपने क्लेम किया है। नहीं, आज भी नहीं बोल रहा? नहीं, नहीं बोल रहा था तो बिल तो आपके पास होंगे ना परचेज के, पूरे पूरे बिल है मेरे तो पास। उनसे डिक्लेरेशन लीजिए। डिक्लेरेशन ले चुका हूँ मैं। तो उस डिक्लेरेशन में वो उन्होंने क्या किया कि B2C दिखाई है या GST में गलत दिया है? B2B दिखाई है, उन्हें GSTR 1 जो है वो लेट फाइल किया है। नहीं, फाइल लेट करना अलग चीज है, वो जो आपकी सप्लाई आप ही के टिन पे दिखाई है। क्योंकि 2A जो है वो एप्लीकेबल है नहीं अब, तो नहीं सर, उसकी। मेरा दूसरा क्वेश्चन है सर, जो हाँ भी आपके सप्लायर जिससे आपने रिसीव करी सप्लाई, जी, उसने आपको अपने GSTR 1 में आपके टिन नंबर पे नहीं दिखाई, तो या तो दिखाई। B2C में दिखाई है हाँ, या किसी गलत टिन पे दिखाई है, GST पे। क्या ऐसा है? आपने पता किया व्यापारी से अपने से? व्यापारी से हमने सारे व्यापारी से पता किया, सब GSTR 1 भरा है और डिक्लेरेशन भी दिए हैं हमको। नहीं, आपके आपके ही नंबर पे दिया है। हाँ, आपके नंबर पे दिया, हमारे नंबर पे दिया है।
तो नंबर पे तो सर दिया फिर है तो तो फिर 2A क्यों में नहीं मिल रहा है? आना तो अब चाहिए। 16 4 में से 5 से भी मिल जाएगी आपको ये, क्योंकि 30 नवंबर 21 तक का तो आ ही गया ना। हम्म। सारी आईटीसी आपने क्लेम करी है। जी। आप तो फिर 2A पे क्यों नहीं दिखाई दे रही? अब मैं क्या बता दूं सर, 2A में काफी नहीं, 2A तो अब तो रिफाइन होके दिख रहा है ना आज की डेट में, यदि आप डाउनलोड करेंगे हाँ हाँ। तो। यदि नहीं दिखाई दे रही तो इसका मतलब जो व्यापारी आपका कह रहा है कि आपके जीएसटीएन पे दिखाई, फिर आपकी जीएसटीएन पे नहीं दिखाई उसने हम्म। सप्लाई। हम्म। तो या या तो फिर किसी सर उसने 30 नवंबर के बाद ही हम फाइल करी हो अपनी हमको R1। केवल 3 लाख कुछ रुपए के बिल है, जो आईटीसी है हमारी, वो हमने एक्स्ट्रा क्लेम करी है, वो हमें भरना है। ये तो हमने दिखा निकाल दिया पूरा टोटल। ये जो 44 लाख हमसे भरने बोल रहे हैं, वो 44 लाख हो गए हमारे। सिर्फ 3 लाख रुपए का जो आईटीसी हमने एक्स्ट्रा ली है, वो नहीं हमारे सर, पास इसमें जैसे हमको इसमें 44 लाख रुपए बोले, हम जो हमें आपके 40 लाख रुपए कुएं में मिले। फिगर आ रही है, जी। आपके यहाँ तो ये कुएं में सोलह फिगर लाख आ छप्पन रही है। हजार दिखा रहे हैं। 2A नहीं तो सर, मेरा इसमें एक क्वेश्चन और है। जो 2A में फिगर आ रही है, हाँ, जितनी आपने क्लेम किया उसमें कितना डिफरेंस है? 16 लाख रुपए। तो वो 16 लाख के इनवॉइसेस नहीं दिखाई दे रहे 2A में। हाँ। तो उसमें तो अब जो एसओपी हाँ 193 आई थी, उसके हिसाब से आपको केवल परसेंटेज ही तो देंगे। हाँ। बट सर सर्टिफिकेट तो लेना पड़ेगा ना। हाँ, सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, लेकिन मिलेगा तो परसेंटेज में सर। सर क्यों जरूरी नहीं है? आज की डेट में तो फुल मिलेगा ना। वो उसी पार्ट टाइम के लिए था ना सर, वो केवल इंटरेस्ट पोर्शन ले सकते हैं यदि मैंने ज्यादा लिया होगा। ये थोड़ी ना कि 5% एक्सेस पे ले लेंगे। मेरा तो दिखाई नहीं दे रहा। रूल 36(4) के हिसाब से तो परसेंटेज ही मिलेगी सर। सर बिल्कुल बात आपकी सही है अवेलेबल का, मगर सर ने तो ले लिया वहां, तो वो पूरी 2A रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। पूरी परचेज ही नहीं शो हो रही 2A में। हाँ, तो ये फिर अपील का मैटर बन जाएगा। नहीं सर, सबसे पहले तो अभी असेसमेंट लेवल में इन्हें वो सबमिट करने पड़ेंगे ना, सबमिट करने पड़ेंगे, डिक्लेरेशन क्लेम सर्टिफिकेट। करनी पड़ेगी। इन्हें क्लेम करके फिर अपील में जाके इसका कहीं बेनिफिट मिलेगा फिर। नहीं, असेसिंग अथॉरिटी दे सकती है सर। नहीं दे रहा वो। हमारे यहाँ आप करी उससे, करी तो गया था वो केस कराने के लिए। नहीं तो सर आपने सप्लायर से शैलेश भाई वो ले लिए सर्टिफिकेट सारे। हाँ ले लिए हैं सर, आप कौन उन्होंने क्या दिखा लिखा है दें। उसमें? लिखा है कि हमने दिए हैं, आप बिल नहीं जमा। सर, उन्होंने ये दिया कि क्या रीजन है 2A में ना दिखाने का। वो वो रीजन दिया। वो रीजन नहीं देखा, हमने देखा तो हमने। सर वो तो जरूरी है ना। हम्म। सर 183 के अंदर वो जो चारों कंडीशन दिए, या तो उसने R1 नहीं भरा, हाँ या हाँ। B2C में दिखा दी, हम्म। या गलत जीएसटीएन पे दिखा दिया। तीनों में से एक उसे ऑप्ट करना पड़ेगा ना, बताना पड़ेगा ना किस में दिखाया है। नहीं, जो अधिकारी था जिससे हम केस करवा रहे हैं, उसी अधिकारी ने एक हमको फॉर्मेट दिया था, बोले इस फॉर्मेट मंगवा लो आप। तो हमने उसी फॉर्मेट मंगवा दिया रहा। ये जो आप दे रहे हैं, हाँ, ये पहली दिख बात रहा है तो सर आपको। उस सर्कुलर के अंदर ये दिया हुआ है कि जो भी आपका सप्लायर है उसको अपने लेटर हेड पे देना है। हाँ, लेटर पे हमने मंगा लिया ये तो ये सेम। तो प्लेन है आपका जो दिख रहा है। ये तो मैं आपको बता, जो मैंने टाइप करके दिया था, ये वो मैटर है, ये बता रहा हूँ आपको। ये ही से मुझे फॉर्मेट दिया, बोले इस फॉर्मेट में आप हमको मंगवा दो। हमने मंगवा लिए हैं। आपको हमको एक आध दिखा दे, तो देखो। सर दे तो दिया ना इसने, पॉइंट नंबर 2 में दे दिया ना। हाँ पॉइंट नंबर 2 में दे दिया ना कि B2B की जगह B2C पे सप्लाई करी है। हाँ तो ये दे तो दिया उसने लिखकर। हाँ। तो इसके बाद से वो चेक कर लेंगे। हाँ, तो वही तो मैंने उससे कहा, सब चेक कर लो बट सर आप। बस उन्होंने एक नीचे गलती करी है। यहाँ पर रेफरेंस दे रहे हैं 183 का, यहाँ 193 आएगा सर। 183 193 18 19 19 17 18 18 19 का था। 193 93 है आ जाएगा सर, कोई यहाँ दिक्कत नहीं। 193 आना चाहिए सर। इतना अधिकारी सपोर्ट कर देगा, वहां पे हम हाथ से कर देंगे 93, कोई दिक्कत नहीं है। जी। तो उसे सर मानना चाहिए, वो सर उनके चेक करके मान लेते हैं सर। ठीक सर। देख लेते हैं कि उतनी उसकी B2C की सेल है कि नहीं। जी जी जी। उसका वो देख के कर लेंगे और दे देंगे बेनिफिट। कोई दिक्कत होगी तो लेकिन फिर मैं आपसे बात करूंगा उस समय फिर। लेकिन सर इसमें डिफरेंस तो बहुत बड़ा। आप 3 लाख के लिए कह रहे हैं, वो 16 लाख की बात कर रहे हैं। ये तो हाँ, सर मान रहे हैं ना 16 लाख। जो 3 लाख तो हम मान रहे हैं कि 3 लाख हमारी गलती है। जो आगे डिमांड में उनकी सर गलती है, वो 16। हमने वो गलत लिया ही है, वो गलत हो गया है हमसे। वो हम मान रहे तेरह हैं। लाख 13 लाख का तो सर्टिफिकेट आ गया ना सर इनका, 3 लाख ही सर्टिफिकेट ओन आ कर गया रहे हैं। हमारा। अच्छा अच्छा। 13 लाख के तो आ गए वहां पे 3 लाख तो B2C हमने का, एडमिट कर वो दिया तो कि हमारी डिपार्टमेंट ने गलती दिया है। 16 लाख का। 3 लाख रुपए जो हमारी गलती है, वो हमने एडमिट कर ली कि साहब कहो तुम जमा कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले आप हमारे 13 लाख तो मानो, तो हम 3 लाख जमा हाँ करेंगे। नहीं सर, इसमें मेरा एक कहना और है। 3 लाख तो अपने जमा करें, इंटरेस्ट तो कब मीटर तो घूमना बंद हो आपका। 3 लाख तो आपका सर एडमिटेड है, वो तो करिए। आप ये वो कंडीशन मत लगाइए शैलेश सर, वो तो जमा करना ही है आपको। ये तो वो तो मंडे को जमा जमा करना, वो करेंगे, तो तो ठीक जमा है, तो कीजिए जमा पहले आप। करेंगे। विद इंटरेस्ट करिएगा सर। हाँ कर देंगे सर। ठीक है सर।
अब 10 मिनट में जिसको भी प्रश्न लेना कृपया ले ले अब, क्योंकि उसके बाद अपने वक्ता महोदय आने वाले हैं। भाई अंकित जी, एक क्वेश्चन मेरा भी है। श्योर सर, लीजिए। एक 2021 में एक क्रेडिट नोट था मेरा। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, आ रही है, आप बोलिए ना। एक क्रेडिट नोट था जो जीएसटीआर 1 में डिक्लेयर नहीं किया से अगेंस्ट सेल, लेकिन जीएसटीआर 9 में डिक्लेयर करके हमने पूरा कर लिया। अब क्या इसका टैक्स, चूंकि जीएसटीआर 1 में मैंने डिक्लेयर नहीं किया, तो उसके बेस पे जो मेरा परचेजर था उसने पूरी आईटीसी क्लेम कर ली होगी। अब मैंने उतना टैक्स कम जमा किया। अब इन डिपार्टमेंट का कहना ये है कि जी चूंकि आपने जीएसटी में डिक्लेयर नहीं किया, इसलिए उसे तो आईटीसी का पूरा बेनिफिट ले लिया और आप टैक्स भी कम देंगे, तो हम कैसे मान लें? क्या किया जाए इसमें? अजय सर, आपने क्रेडिट नोट इशू किया था उसको, पार्टी को? हाँ, क्रेडिट नोट इशू किया है जी। तो आपने क्रेडिट नोट इशू किया है तो फिर असेसिंग अथॉरिटी से पूछिए कि सर जब मैंने क्रेडिट नोट इशू कर दिया तो वो कैसे ले सकता ज्यादा। नहीं, उनका कहना ये है कि मेरे को जीएसटीआर 1 में भी डिक्लेयर करना चाहिए था अपना क्रेडिट सर नोट। मैंने रह गया, मेरा कोई बात नहीं, मैंने सीएन इशू कर दिया। बुक्स लायबिलिटी में मेरा जितना गुड्स लौट के आ गया उसका मेरे पास प्रूफ है। जी। सामने वाले पार्टी ने उतना मुझे पैसा कम दिया, उसका लेजर प्रूफ होगा। हाँ। तो सर वो कैसे ले लेगा, आप बताइए, उनसे पूछिए कि वो कैसे ले लेगा जब उसने उतना गुड्स रिटर्न कर लिया, तो संजय जितना रिसीव किया उसी पे ही तो लेगा भाई। संजय सर जी सर। हाँ, संजय बोलो सर सर, जी संजय सर, उसने यही ऐसे ले लिया, इनका कहना ये है, ऑफिसर का कहना ये होगा कि परचेज गई 100 रुपए की, ठीक है, जी जी 10 रुपए की क्रेडिट नोट आपने उसको दे दी, जी जीएसटीआर 1 में नहीं डाली, तो उसने तो 10 रुपए की रिवर्स नहीं करी, 100 रुपए की लेके बैठा हुआ है। वो जी अपना जी माइनस बिल्कुल। कहाँ कर रहा? सत्येन वो जी, अपना जब उस माइनस कहाँ कर रहा? सत्येन जी, आप क्रेडिट नोट तभी तो इश्यू करोगे जब 10 रुपए का माल आपके पास रिसीव हो जाएगा वापस उससे। नहीं वो तो मुझे इनने सर पैसे भी तो 90 के ही देगा। माल तो इनकी पार्टी ने वापस ले लिया, लेकिन क्रेडिट नोट को जीएसटीआर 1 में अपलोड नहीं करा, ताकि वो वहां पे उसके यहाँ रिफ्लेक्ट हो 2A उसका में, तो वो आईटीसी उसकी तो होना क्रेडिट को चाहिए था। वापस करे। तो वो ये सर तो ये मैनुअली टू मैनुअली दे दिया, सिर्फ मैनुअली टू मैनुअली दे दिया, और उसको जीएसटीआर 1 में अपलोड नहीं करा, तो उसने क्रेडिट माइनस नहीं कर पाया वहां। वो तो पूरे 100 रुपए की परचेज पे लेके बैठा हुआ है ना, और सत्येन जी, क्रेडिट नोट को जी। सिर्फ बुक एडजस्टमेंट मान मेरा के मेरा ये बुक। मानना है सर, वो कैसे ले लेगा जब उसने 10 रुपए वापस कर दिया, तो इफेक्टिव वैल्यू तो उसमें 90 ही रह गई। माल तो सर उसने उसको वापस कर पहले तो दिया। परचेज तो 2A से 100 रुपए चली गई थी ना सर। तो अब ये वो भी तो बाप उसकी जो ड्यूटी है रिवर्स करने की 10 रुपए की। नहीं, वो यहाँ पे जब जीएसटीआर 1 में डलता है ना सर, जब 2A में जाता है तब माइनस करके अपन रिवर्स मैं ये करते कहता हैं। हूँ सर, यदि मेरे सप्लायर ने नहीं करी तो ये मेरी ड्यूटी नहीं है, मुझे 10 रुपए कम देनी है आईटीसी जो मैंने गुड्स वापस कर दिया। नहीं, फिर क्या होता ना सर, एक बात समझिए, एक बार मैं खुद अपने आप से रिवर्स कर देता हूँ, और फिर जब सप्लायर फिर अगेन डालता, तो मुझे जो 2A से डिफरेंस निकल के आता ना, तब मुझे फिर रिवर्स करनी पड़ती। इसलिए मैं क्या करता हूँ जी। कि तभी रिवर्स करता हूँ जब वो जीएसटीआर 1 में डाल दे और मेरे 2A में आ जाए। 2A में आ जाएगा क्रेडिट नोट, तो मुझे पता चल गया कि हाँ भाई उसने डाल दिया और अब मुझे रिवर्स करना है। ऐसे करी सत्येन होगी जी, तो इसके लिए भी तो वो कंडीशन उस टाइम अक्टूबर तक थी ना, अगले ये साल हाँ, ये इसका अक्टूबर इसका तक नहीं आया। DRC 03 भर के कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। जी DRC 03 सबमिट करके उसकी उतना अपना लैच कर लो। सर, रवि जी, मैं DRC 03 क्यों करूंगा, एडमिटेड टैक्स लायबिलिटी क्यों मानूंगा? सर उन्होंने वो क्रेडिट नोट तो इशू कर दिया, जी रिटर्न में शो नहीं किया। सर, दैट इज टेक्निकल प्रॉब्लम है कि मैंने नहीं यदि सर, उस टाइम नहीं रहने से भूल गया। ऑनलाइन उतना एक्सेस बोलेगा ना आईटीसी। नहीं, चलिए, अब इसमें एक चीज हो सकती है ना, उस पार्टी से एक सर्टिफिकेट लेके मैं सर्टिफिकेट सबमिट कर दूं, उसको जी बताया कि बिल्कुल बिल्कुल, अजय जी बिल्कुल कर सकते हैं आप कि मैंने मैं क्या, केवल 90 की क्रेडिट ली है। हाँ, वो एक सर्टिफिकेट दे दे मेरे को कि भी मैंने केवल इतना क्रेडिट लिया इसका। जी बिल्कुल। हाँ, मैंने यही प्रोसीजर अडॉप्ट कर रहा हूँ, मैंने उससे सर्टिफिकेट मंगवाया है। सर सर्टिफिकेट के साथ साथ आप अपने से पीओ उसको एओ को वो भी लगा दीजिए सर, उसका लेजर कि उसने 90 रुपए पेमेंट किया, 90 पे क्रेडिट लिए, दोनों चीजें कवर हो जाएंगी सर हाँ, आपकी। उसका लेजर लगा दूं और उसका जी उससे पेमेंट का मंगवा लूं, पेमेंट इतना दिया है मैंने। जी जी बिल्कुल तीन बिल्कुल। चीज लगा दूं मैं इसी में। जी जी ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। जी सहयोग सर। ये सर। 17-18 में ना 2 लाख की डिमांड है। जी अब एमनेस्टी स्कीम आई, जब पता लगा, व्यापारी हमारे पास आया लेके कि 2 लाख की मूल की डिमांड है, 2.5 लाख ब्याज की डिमांड है, बाकी पेनल्टी है। तो ऑफिसर ने कहा कि भैया इसको जमा कर दो आप 2 लाख रुपए, तो आपके सब माफ हो जाएंगे। जी
देखिए सर, मेन बात यह है कि हमारी 2 लाख भी हमें जमा नहीं करना मूल जो है, क्योंकि वो जी सेस में लगा रखे हैं और सेस हमारे आइटम पे है ही नहीं। जी। तो अब सर एडवाइस दीजिए क्या करना चाहिए, मतलब अब हाई कोर्ट हाई जाना चाहिए सर। हाई कोर्ट जाना चाहिए या एमनेस्टी स्कीम में लेना चाहिए क्या? नहीं सर, हाई कोर्ट जाना चाहिए। हाई कोर्ट एमनेस्टी। तो सर जैसे 17, 18, 9 महीने का है, बहुत हो गए, तो इस बात पे डिले तो नहीं हो जाएगा कि आपके इतने दिन हो गए कुछ? सर आपको देखिए जब जानकारी हुई, आप तो उसमें ये ग्राउंड लोगे ना कि मुझे जानकारी अभी हुई ऑर्डर की। अच्छा, 18, 19 का वो केस कब आ चुके सर उसके बाद? तो वो चाहे कभी भी कराए, क्योंकि आपको ऑर्डर की जानकारी नहीं थी। ऑर्डर की जानकारी होती तो आप तभी जमा कराते ना। जी जी जी। और नहीं, पहले जमा तो भी नहीं होना जमा भी पह, नहीं होना सर वो तो। पहले तो सर अपील फाइल कर दीजिए अपने नियर जुडिक्शन पे पहले, भले अपील रिजेक्ट हो, पहले अच्छा। अपील। हाँ सर पहले उसमें लंबा प्रोसीजर हो जाएगा ना। अभी मान लो अगर इनकी वहीं सीधे हाई कोर्ट चले जाएंगे ना, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। ऐसा तो नहीं अपील वाले कहेंगे कि आपने अपील, वो हाई कोर्ट वाले कहेंगे आपने अपील हाँ वो जमा नहीं कह कर? सकते हैं कि आपने निचली एडमिशन अदालत स्टेज में पे क्यों कह नहीं की सकते हैं, सुनवाई मगर की। आपको प्रूव करना पड़ेगा सर वहां पर कि हमने लेट देखा, हम देख ही नहीं पाए। फर्म नहीं आपकी एग्जिस्टेंस में चल रही है या बंद हो चुकी? चल रही है फर्म। चल रही है तो उन्होंने देखा ही नहीं नोटिस में, वहां तो वो ये कहेगा ना डिपार्टमेंट कि हमने तो जी नोटिस दिया, आपके उसमें पोर्टल पे दिख रहा था जी। एडिशनल नोटिस में। उसका सही तरीका यही है कि आप अपील फाइल कर दीजिए, वहां से रिजेक्ट कराइए और उस सेम डेट में फिर उसके बाद आप हाई कोर्ट लेके चले जाइए प्रोसेस के थ्रू। एमनेस्टी तो नहीं मिलेगी सर आपको उस पर। नहीं सर, जी एक जी। बात तो बताइए, जब नहीं, इनके पे सेस एमनेस्टी तो मिल एप्लीकेबल जाएगी सर। नहीं है। सर कैसे एमनेस्टी मिल में जाए? कोई नहीं तो सर, फिर 2 लाख रुपए जमा करने पड़ेंगे, इन्हें करने हाँ, से वही नहीं एमनेस्टी है। जब वही तो वो कह रहे हैं शेष सर। है ही नहीं तो एमनेस्टी टैक्स तो जमा यही है कि करेंगे क्या टैक्स, सर, वो एमनेस्टी हाँ, लेके 2 लाख चलेंगे। रुपए जमा करेंगे तो मिल जाएगी इन्हें। लेकिन फायदा नहीं है ना सर। बस। एमनेस्टी के लिए हम मना पे थोड़ी है नहीं करेंगे वो वो। आइटम। अंकित जी एक बात तो बताओ, जी सर। इनका क्या ऑर्डर के अगेंस्ट निकला सेस की डिमांड? जी। तो फिर ऑर्डर जब किया आप ना पे सर उन्होंने। एप्लीकेबल नहीं तो 161 क्यों नहीं लगाते तो कि सर, मेरे पे एप्लीकेबल ही नहीं है? सर 90 दिन वो उसके भी तो निकल गए ना सर, ऑर्डर से सर डिटेल दो से। दो सर साल सर हो एक चीज दो और साल हो गए। एक चीज और बताओ, अशोक सर, लोकल 90 जुडिक्शन दिन वो भी लोकल निकल गए अब तो। लोकल नहीं सर, 161 लग जाएगी सर अभी। कैसे? सर लो, लग दो रही है, साल हो पुराने गए। ऑर्डर पे लग रही है। सर लोकल मैंने नहीं लग जुडिक्शन। रहे, देखा आप था, नहीं एनेक्सर आई ए थी वाली बात सीधी। बता रहे हो ना, 12/24 से जो इफेक्ट हुआ है 16/5 16/6 का। नहीं, उसके बिना भी लग रही है सर। नहीं लग वो रही, उसमें हमारे भी यहाँ लग तो रही। सब लोगों ने, कईयों ने कोशिश करी, नहीं लगी अभी तक। सर मैंने तो हमारी वाली एक फाइल में नहीं एक आ रहा करके सर देखी थी सर। हाँ, सुनिए आप सर, संजोग जी देख के देखिएगा। अरे इसलिए नहीं आ रहा 161 नहीं नहीं आ आ रहा, रहा। नहीं आ रहा, मैं कह रहा हूँ ना। क्योंकि ये सर तो अच्छा। ऑर्डर की गलती है, उससे में ये आपको लगानी चाहिए थी 161। ये तो ऑर्डर की गलती है ना, सेस जब है ही नहीं मैं आप पे। मेरा कहना बट ये है सर, सर, ऑर्डर ने सर वो ऑर्डर तो होनी तो तभी डिपार्टमेंट थी ना, 90 दिन के अंदर, वो भी तो टाइम निकल गया इनका। जा रही है कह रहे सर, ऑर्डर ऑर्डर तो डिपार्टमेंट ने गलत इशू किया है ना, तो वो तो कभी भी जी रेटिफाई कर सकता है अपने जी नहीं अपने। सर, 6 महीने सर है उसको उसके छह लिए भी। महीने के अंदर अधिकारी करेगा और 3 महीने के अंदर आपको अप्लाई करना है। कभी का कोई टाइम नहीं है सर, 180 दिन का है मैक्सिमम उसमें, सुमोटो हाँ, अधिकारी भी करेगा तो। तो यहाँ गलती हमारे पार्ट पर है कि हमने देखा नहीं कि ऑर्डर में जी, गलत जुबान निकाल दी। ऑब्वियसली, बिल्कुल सर। वो तो सर लेकिन एमनेस्टी स्कीम आई जब व्यापारी को पता लगा, उसने मुझे बताया आके। लेकिन सर फर्स्ट अपील में जाएंगे अभी जैसे, तो जी। 10% ऑफ डिस्प्यूटेड अमाउंट भी तो करना पड़ेगा जमा। हम्म। रिजेक्ट किसका हो सर? करना ही जाएगी पड़ेगा, वो वो अलग तो बात बीस है। हजार 20,000 होगा वो तो। तो 20 हो गई होगा सर अपील की, वो तो कंडीशन है सर। 2 लाख और वो भी 20,000 करना में तो पड़ेगा। बहुत फर्क है। जिसमें रिप्लाई नहीं पा रहे हैं, हम नहीं ले रहे हैं, रिप्लाई नहीं आज के बजट पे डिस्कस करें कुछ सर, जीएसटी से अंकित जी? जी जरूर सर, सर। जरूर जरूर। एक बेनिफिट तो हो गया है सर, क्या चीज टीसीएस सर? वाला प्रोविजन खत्म हो जाएगा 1 अप्रैल से। नहीं तो टीसीएस पूरा ही खत्म कर रहे हैं सर, कैसे? हाँ नहीं, जीएसटी में जो था ना, कलेक्शन होता था ना 50 लाख से ऊपर हाँ वाले जी, पे, 206 हाँ जी, हाँ 200, जी। वो खत्म हो रहा है बोले। अच्छा, उस पे अब ये पुराने पुराने निकाल रहे हैं अधिकारी। इस बीच तक के निकालेंगे लेकिन। हाँ तो वो तो अब होगा तो वो डेट से। 31 सिंपल, हाँ जी। हाँ, बस एक उन्होंने वो चेंज कर दिया है जो सर, एक तो ये हो गया कि रेड, आपका पेनल्टी वाला था ना, कि हाँ जी। पेनल्टी के अंदर जो चेंज था, ये तो 25% जमा करना होता था आपको 129 जी केस में, जी। उसमें वेलकम प्रोविजन आ जाएगा कि 10% उस पर भी हो गया। वो बहुत अच्छा रहेगा सर, क्योंकि जी, बहुत सारे केसेस में क्या होता था कि 25% के बाद रिफंड लेना पड़ता था। बड़ा मुश्किल हो जहाँ पे जाती थी पाँच जब अपील जहाँ पे छूट जाती थी। जहाँ पे 5% की टैक्स अमाउंट होती थी ना, हम्म, वहां पे वो 25% जमा करके काफी बड़ा अमाउंट बैठ जाता था। हम्म। ठीक है चलिए ये सर, तो। हमारे महोदय आ चुके हैं, श्री दीपक जोशी जी महोदय।
तो सर हम लोग रोक लगा लेते सर, आप क्या आपका आदेश है सर, एडमिन की तो माननी पड़ेगी सर। नहीं सर, क्योंकि हम और आप कहीं बात कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे अतिथि महोदय, अतिथि फैकल्टी होते हैं, उनका समय बहुत कीमती होता है। जी बड़ी व्यस्तताओं से समय निकाल कर हमारे बीच पर आते हैं। ठीक। वेलकम दीपक सर। और आज हमारे थैंक यू वेरी मच। आज हमारे सरस्वती पुत्र दीपक सर पधार चुके हैं, जिनका मुख्य वक्ता है जो आज हमारे, और मैं शैलेश विश्वकर्मा जी जो छतरपुर मध्य प्रदेश से हैं, पहले मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले सर का परिचय दे दें और उसके बाद फिर सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि अपना उद्बोधन प्रारंभ करें। नमस्कार सर, मैं शैलेश विश्वकर्मा, छतरपुर मध्य प्रदेश से। और चूंकि महोदय आ गए थे, इसलिए हमने पूर्व में होने वाले वार्तालाप को रोका, क्योंकि सर बड़े समय निकाल कर हमारे बीच में पधारे हैं। और इनका परिचय देने में ही मुझको 2-3 मिनट लग जाते हैं। उसके बाद सर का परिचय, सर का उद्बोधन शुरू होगा। तो सर का परिचय मैं आपको सामने रखता हूँ। दीपक एन जोशी एक प्रैक्टिसिंग कास्ट अकाउंटेंट हैं। आप देवधर जोशी एंड एसोसिएट में एक भागीदार के रूप में काम कर रहे हैं। यह जो फर्म है, ये अप्रत्यक्ष करों में अग्रणी फर्म है। इसमें जो मुकदमा बाजी वगैरह होता है, इसमें ये काम करते हैं। अपने जो क्लाइंट्स होते हैं उनके लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर से संबंधित मामलों में जो जिसके पहले जो सर्विस टैक्स था या एक्साइज ड्यूटी वाला का प्रकरण था, तो उसके पहले तक ये ट्रिब्यूनल तक इनने कई बार गए और वहां पर जाकर प्रकरण का सामना किया और जीते। आप द इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के फेलो सदस्य भी हैं। आप इनपुट टैक्स क्रेडिट मुद्दों और चुनौतियों में अपनी पर पीएचडी कर रहे हैं। जो इनपुट टैक्स क्रेडिट की जो बहुत बड़ा एक मसला ऐसा है जो काफी विवादास्पद भी है, पर आप पीएचडी कर रहे हैं। आपने महत्वपूर्ण मुद्दों पर पीएचडी के भाग में एक यूजीसी की मान्यता प्राप्त करते हुए 4 शोध पत्र ही प्रकाशित किए हैं। आपने अप्रत्यक्ष करों के मामले में लगभग 150 से अधिक लघु, मध्यम और बड़े पैमाने के उद्योगों को परामर्श दिया है। आंतरिक इंटरनल ऑडिट करते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 के तहत कई सार्वजनिक और निजी लिमिटेड कंपनियों की लागत लेखा प्रणाली, लागत लेखा रिकॉर्ड और लागत लेखा परीक्षा भी का काम भी करते हैं। आप विद्या प्रबोधिनी प्रशाला सीबीएसई स्कूल में के अध्यक्ष हैं। आप लागत लेखा करो के नासिक का जो चैप्टर है वहाँ के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। ICMAI और WIRC के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष करों के टास्क फोर्स के नामित सदस्य भी हैं। आप द इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के कर अनुसंधान विभाग के एक संसाधन व्यक्ति भी हैं। इसके लिए आप CA, CMA और CS फाइनल के जो विषय होते हैं वो अप्रत्यक्ष कर और वित्तीय प्रबंधन के आप प्रत्यक्ष के लिए प्रत्यक्ष शिक्षक भी हैं। आप ICAMAI द्वारा संचालित GST प्रमाण पाठ्यक्रम के लिए अधिकारी शिक्षक भी हैं। 2017 के फाइल प्रिंट को समझने के लिए टैक्स बेन की जो एक संपादकीय समिति बनी थी, उसके एक हिस्सा भी थे। ये इनका परिचय है आपके सामने जो मैंने रखा। और हमारे बीच में कई चार्टर्ड अकाउंटेंट और अधिवक्ता आज पहली बार हमारे बीच में CMA, अब इसका पूरा फुल फॉर्म सर अब हम बताएंगे। कास्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट कहलाता है। वैसे हमारी काफ़ी इच्छा थी कि एक CMA भी हमारे बीच में कभी आकर उद्बोधन दे। तो आज हमारे बीच में दीपक एन जोशी हमारे बीच में उपलब्ध हैं। आज वो हमारे बीच में उपलब्ध है जो उद्बोधन देंगे। तो CMA के रूप में उनका पहला उद्बोधन होगा। आदरणीय दीपक जी, अपना उद्बोधन शुरू करिए। Thank you, Shailesh ji. At the outset, I'm grateful to all the 3 organizations, Uttar Pradesh Kar Avideta Sangathan, Narmadapur Harda Jilla Tax Bar Association and Tax Bar Association of Chhattisgarh for giving me this wonderful opportunity to interact with you all immediately after this budget. And I was in the beginning, you were discussing some of the provisions of budget. I feel it is very important to have the appropriate knowledge of budget in order to convey the same to our client. Today, I am going to deliberate on one of the important aspects, that is classification of goods under
GST law with special focus on Customs Tariff Act 1975. During the journey of this last 7 years, we have seen a lot of litigation, and particularly those litigations were based on the provisions of input tax credit, mainly show cause notices or proceedings were initiated by the department based on the data analysis, where lesser number of issues were based on the point of law. Mostly factual things we have observed or we have litigated till date. Classification is one of the issue which we have seen in the erstwhile regime. Lot of litigations were there. It was expected that when GST will come, simplified classification methodology will be there. But unfortunately, we have to say that government has taken the classification system from the erstwhile regime only, from the Customs Tariff Act, which itself is very complicated system. You will find that very few practitioners are there who are doing the classification activity, because a lot of technical knowledge is required, product knowledge of that particular commodity process. Then you require to know the explanatory notes which are provided by the HSN. Then you require to go through the section notes and chapter notes, and based on that you require to decide the HSN. So similar system they have continued in GST also, and in today's deliberation, of course, within a span of 1.5 hours, it is very difficult to understand the classification system or to understand how the product classification is generally done by the industry. But we will try to have the overview of how the products can be classified into the different chapter headings using the interpretational rules provided in the Customs Tariff Act, read with various section notes and chapter notes, along with the dash system. Okay, these are the 4 important aspects which you require to consider when you start the classification of any particular goods. So let's begin our session. Just will share my screen. Yes, sir. Screen share, sir. Is it visible, sir? जी सर visible है. Okay. Classification of goods and service under GST laws. Correct. So before we begin, how many of you knows the classification system under GST? Make it interactive so that the purpose of this session will be fulfilled. So why classification is required? Can anyone answer? Why classification is required? Otherwise, also when we go to say in the mall to buy some clothes, you'll find that size-wise they have classified the cloths, right? 40 number, 42 number, 43 number. Why? Because it is not possible every time to see or to know the exact requirement of any customer. So that is why they have classified according to the size. Similar principle is applicable in case of classification of goods also. Is it possible for the government to enlist all the goods and services? कितने goods and services है? Just imagine, सुबह हम उठते हैं, सुबह उठने से रात सोने तक, how many goods and services we are consumed?
और अगर आप पेन और पेंसिल लेके बैठोगे तो आई चैलेंज यू, एटलीस्ट 50 नाम तो आप लिख दोगे कि these many commodities or these many services we are consuming every day, right? So is it possible for the government to prescribe the rate of tax against each and every commodity? Similarly, is it possible for the government to classify one common tax rate, particularly country like India? It is not possible because we have numerous categories of goods and there is cultural differences, right? So it is not possible for the government to have one common single rate. And that is why only answer to this question is to make the group and subgroup of the commodities, and based on that group and subgroup, you define the tax rate. And the most scientific method, which is not only adopted by the India, but almost 200 countries, they have adopted this methodology of classification of goods, that is known as classification based on HSN. HSN is earlier used under central excise law. It was first time used in under the Customs Act. Foreign trade policy is also based on the Customs Tariff Act. For the intelligence and statistical thing also, Director of General of Commercial and Intelligence and Statistics, they are also using this HSN system. So what is this HSN system? HSN system is known as Harmonized System of Nomenclature. HSN, Harmonized System of Nomenclature. So both Central Excise Tariff Act and Customs Tariff Act is based on Harmonized System of Nomenclature, HSN. GST Council has also adopted HSN for the purpose of classification of goods under the GST law. The Custom Tariff Act is based on HSN and GST rates have been notified on the basis of Customs Tariff Act. So indirectly, even in GST also, we have adopted HSN, that is Harmonized System of Nomenclature. What is this Harmonized System of Nomenclature? Harmonized systems of nomenclature is the product coding system which is developed by World Customs Organization, WCO, World Customs Organization. They have developed this harmonized system of nomenclature where they have classified almost 5,000 commodity groups in the 6-digit codes arranged in a legal and logical structure. The system is used by more than 200 countries. So even India has also adopted this harmonized system of nomenclature. We are the member country of WCO who have adopted this harmonized system of nomenclature. Now, the member countries of WCO like India are allowed to extend the codes up to any level subject to condition that nothing changed at the 4-digit or 6-digit level. As I mentioned, almost 5,000 commodities or commodity groups WCO has classified in HSN by providing 6-digit code. But if you see, Indian Customs Act or Indian Customs Tariff is 8-digit. So WCO has allowed you to add 2 more digits or maybe 4 more digits, but you are not allowed to make the changes in first 6-digit. India has developed 8-digit level of classification to indicate the specific statistical codes for indigenous product and also monitor the trade volumes. Now, if you see this harmonized system of nomenclature, after every 4 years or 6 years, they make certain changes, right? Based on the technological progress, based on the trade flows, there are different that are working for the
World Custom Organization, who makes the discussion with various trade bodies, who sees the processes, who sees the technicalities of that particular product, and based on all those aspects, they are making the changes in the classification system in the HSN codes for the purpose of uniform interpretation of motor vehicle that is provided under the explanatory notes which are provided by the HSN, right? Now, under GST law, notification number 1/2017 central tax rate and notification number 2/2017 central tax rate governs the rate of tax. 1/2017 prescribing the rate of tax applicable or rate of GST applicable on the supply of goods. Notification number 2/2017 central tax rate provides the exemptions or list of commodities which are not subject to the GST, maybe conditionally or otherwise, right? So if you see notification number 1/2017, there are total 7 schedules. Schedule 1, Schedule 2, Schedule 3, Schedule 4, Schedule 5, Schedule 6, and Schedule 7. Right? Total 6 types of tax rates are notified by the government on the recommendation of GST Council. The first class of rate is 5%, which is prescribed under Schedule 1. So commodities which are provided under Schedule 1 are subject to 5% tax rate under the GST. Schedule 2 is subject to 12%. Schedule 3 is subject to 18%. Schedule 4 is subject to 14%. Schedule 5 is applicable in case of precious metal, 3%, and so on. Right? So these are the tax rates which are prescribed in notification number 1/2017 central tax rate. If you see the schedule, okay, here I have covered the schedule. For the clarity of audience, I am just highlighting this. Schedule 1, 0.5%. How it is prescribed? So there is one table, okay, wherein serial number, chapter headings, chapter heading, subheading, tariff item, and description. अरे आपको कुछ नहीं करना है, दस्तखत करना नहीं, कुछ नहीं करना, पढ़ना कब है विद्यालय कैसे करें? अब लोग कितने बजे चलना? 10 बजे। I request organizer to आपको कल लेके जा रहे हैं विद्यालय में से ना, कभी मैं ऑनलाइन नहीं करते हो? मेरे को सुबह अगर 7 उठ के जल्दी तो मैं जल्दी चली जाऊँ। हर्षी फिर रावरी तो मैंने करा था वीमैक्स से एसबीआई, क्योंकि लेने को पापा नहीं है। पापा क्या तो वो तुम संस्कृति और संस्कार से जोड़ने की बात कर रहा है बेटा जी। kindly mute your mic. इसलिए मैं अभी नहीं करी। अच्छा, तो इसमें अपने को नवीन अभिभावक पीले लाल रंग के पोशाक। So the tax rates which are prescribed under the schedule are based on chapter, heading, subheading, and tariff item, against which the description is provided under the respective schedule. And that is why it is essential chapter, heading, subheading, and tariff item in order to make the classification properly. फिर पापा दादा भाई को फोन लगाएंगे, फिर वो मुझे लेने आए। Explanation के लिए हम चलेंगे ना भाई, 10 तारीख को 10 बजे 5 बजे तक हम पीला कुर्ता पहन लेंगे। 20th June 2017, you'll find that CBIC clarified that tariff item, subheading, heading, and chapter shall mean respectively item, subheading, heading, and chapter as specified in the first schedule to the Customs Tariff Act.
So whenever you want to interpret this chapter, heading, subheading, and tariff item, and particularly when you want to interpret these entries, like in first schedule, if you see the first item is 0202 or 0203, it is the heading. And if you want to interpret this heading, you require to take the help of tariff item, subheading, heading, chapter, which is prescribed under the Customs Tariff Act, under the first schedule to the Customs Tariff Act 1975. Similarly, when another explanatory note states that the rules for interpretation of the first schedule to the Customs Tariff Act 1975, including the section and chapter note and general explanatory notes of the first schedule, shall so far as may apply to the interpretation of this notification. So whenever you want to make the classification, you also require to take the cognizance of rules for interpretation of the first schedule to the Customs Tariff Act, section notes and chapter notes provided at the beginning of each section and each chapter, and the general explanatory notes which are provided to the first schedule will be equally applicable in case of GST also. So the next question, who is responsible for the classification? We know that there are two concepts under the GST law. One is supplier and second is recipient. Normally recipient raises the purchase order on the supplier, and based on that purchase order, supplier is supplying goods or services to the recipient. So who is responsible for the classification? Is it supplier or recipient? So there are cited judgments, there are settled judgment in case of Steel Authorities of India versus Commissioner of Central Excise. It was held that classification of product is to be done by the consignor only. Similarly, in case of Union of India versus Bharat Forge, it was held that classification is the responsibility of supplier. Purchaser is not applied to indicate the classification of goods he is purchasing. So in GST context also, this is equally responsible, and we have seen that in many cases, particularly trading lobby, trading people who are doing the trading activity, they are doing the classification or they are selling goods based on what their supplier has mentioned in their invoice. It is totally incorrect. Who is responsible for the valuation, or who is responsible for the classification? Person who is supplying the goods is responsible for the classification. So it may happen that the person who have sold goods to you may have not taken the cognizance of the classification. So it is the responsibility of supplier to do the appropriate classification. Now, as I mentioned earlier, the classification under the GST law is based on the Customs Tariff Act 1975. See, Customs Tariff Act 1975 is based on HSN, right? And that Customs Tariff Act is applicable in case of GST also. So let's take the overview of Customs Tariff Act. Customs Tariff Act is divided into 13 sections and 2 schedules. So there are 13 sections under the Customs Tariff Act and 2 schedules. Okay. First schedule is related to the import tariff, and second schedule is related to the export tariff, right? First schedule, that is import tariff, is very wide enough. It includes all the chapter headings because almost all the commodities which are imported are subject to the custom duty under the Customs Tariff Act, right? Whereas export tariff, export duty is not applicable on all the goods. It is applicable only on the few goods, right? That is why export tariff is not provided in detail, whereas import tariff is detailed, which is bifurcated into 21 sections, into 98 chapters, and more than 1,000 and 2,000 heading, right? So classification of goods under the GST law is based on the first schedule to the Customs Tariff Act. It is not based on the second schedule. It is based on the import tariff. Please remember, it is based on the import tariff. So classification of goods under the GST law is based on the first schedule to the Customs Tariff Act 1975. First schedule of Customs Tariff Act is further divided into 21 sections.
98 chapters, including more than 1000 headings and 2000 subheadings. So first schedule is divided into 21 sections, which are further divided into 98 chapters. These chapters are further divided into sub-chapters. Sub-chapters are further divided into headings and subheadings. And that is why it is important to understand the meaning of this terminology: section, chapter, sub-chapter, headings, and subheadings. Because these things are going to help you in doing the classification. Please remember, whenever you will do the classification, you require to know the classification rules which are provided under the Customs Tariff Act. You required to know the section note and chapter note. You required to know the dash system. And along with these three aspects, you also required to know the explanatory notes which are given by the HSN, which are given under the HSN. So these are the four aspects which forms a very important part whenever you are doing the classification under the GST law. So as I mentioned, there are total 21 sections under the first schedule to the Customs Tariff Act. There are 98 chapters which are further divided into sub-chapters, heading and subheading. So it is important to understand what is the meaning of section, what is the meaning of chapter, what is the meaning of heading and subheading. Because this will decide, or this will govern how to do the product classification. So section, what is section? Section is the grouping of number of chapters. So number of chapters are grouped into the single section. That is known as section. So there are total 21 sections. For example, section 1, if you see, it is related to the animal products. Section 2 is regarding vegetable product, right? Section 5 is regarding mineral product. Section 11 is regarding textile and textile product, and so on. So there are total 21 sections, right? 21 section denotes the different class of goods which are consolidated into the single section. So similar class of goods or similar class of chapters that are consolidated into the single section, that is known as section. Now, at the beginning of every section, you will find that there is section note. Now, why section notes are provided? Section notes are provided at the beginning of each section to understand the coverage of that particular section. What is to be included in this section and what is to be excluded from this section. For example, if you see the section 17, okay, section 17, here I am highlighting section 17. Section 17 is regarding vehicle, aircraft, vessel, and associated transport. Right? Here you will find that all the types of vehicles are covered in that particular section. Right? It also includes parts and accessories of vehicles. That is also covered under that section. But if you see the section note of this section 17, you will find that they have excluded general items. Okay, general use items. For example, screw, washer, right? These are the general item, general class of items, right? Even if you are using washer, screws, or nut bolts as the part of your motor vehicle, but they will not be treated as the parts of motor vehicle, and they are excluded from the section 17. So what is section note? Section note prescribes the coverage of that section. What is to be included, what is included in this section, what is excluded from this section. Correct? So there are total 21 sections.
These sections are further bifurcated into the chapters. Okay, so there are total 98 chapters. Each section has been divided into chapters and sub-chapters. So these 21 sections are bifurcated or divided into 98 chapters. There are total 98 chapters to the first schedule of the Customs Tariff Act, and each chapter contains goods of particular class. The tariff has been designed in such manner that it consolidates all the goods relating to the particular industry in one group. So whenever the sequence of this particular chapter or heading and subheading was decided, it was decided based on the logical sequence. It starts with the natural product, then raw material, then intermediate product, and then the finished goods. So you will find that in all the chapters, this sequence will remain there. It will start with the natural product, right? Then there will be raw material, then there will be intermediate goods, and then there will be finished goods. Based on this logical sequence only, they have designed the chapters. Some chapters are further divided into the sub-chapters. Take example of chapter number 71. 71 is regarding natural or cultured pearl, precious, right? So it is further divided into natural or cultured pearls and precious or semi-precious stones, precious metals and metal clad with the precious metal, jewelry, goldsmith and silversmith wares and other articles. Right? So chapters, there are total 98 chapters. Some of the chapters are further divided into the sub-chapters. Like section note, at the beginning of each chapter, you will find that there are chapter notes also. Now, why these chapter notes are provided? Chapter notes are provided to understand the coverage of chapter. We have seen why section notes are provided. Section notes are provided to understand the coverage of section. Correct? Whereas chapter notes are provided to understand the coverage of that particular chapter. Right? Your classification is always based on section note and chapter notes. You cannot go beyond the section note or chapter note. So whenever you want to classify any goods under the particular chapter heading, you require to see what section says, what chapter note says. Okay, what section note says, what chapter note says, based on the section note and chapter note only, you can do the classification. And that is why, apart from the classification rules are very important whenever you are doing the classification activity. But along with classification rules, you require to read section note and chapter note in order to classify the goods under the particular heading or subheading. Now next is heading and subheading. We have seen HSN, which is designed by the World Customs Organization, WCO. They have given the 6-digit product coding, whereas India has adopted 8-digit product coding system. Okay, so what is this 8-digit code? Right? For example, HSN for other parts and accessories of motor vehicle is 87089100. Now, what is the significance of this 8-digit code? Iska meaning kya hai? Right? So, first 87 signifies the number of that particular chapter. So 87 is the number of chapter. Next 2 digit 08, 8708. So first 4 digit signifies the heading of chapter or heading of that particular commodity. Next 2 digit signifies the subheading, and last 2 digits are signifies the tariff item. So 87089100, right? First 2 digit is heading. First 4 digit is
First 2 digit is chapter number. First 4 digits is your heading number. Next 2 digit, after 4 digit, जो भी next 2 digit आएंगे, that is your subheading, and last 2 digit is your tariff item. Right? Now under GST, whenever you will read notification number 1/2017, you will find that rate of tax in certain cases are provided at chapter level. In certain cases, it is provided at heading level. In certain cases, it is provided at subheading level. And in certain cases, it is provided at tariff item level also. If you see the Customs Tariff Act, if you see the first schedule to the Customs Tariff Act, tax rate are provided at tariff item level. Right? But in GST, it may be at chapter level, it may be at heading level, it may be at subheading level, or it may be at the tariff item level. And that is why it is not so, because in many cases we have seen that people just do the classification up to 4 digit or up to 6 digit, but that is not correct. You should know total 8 digit code of your product, and then only based on that 8 digit HSN, you should see the tax rate which is applicable for that particular goods. Now, as I mentioned, whenever this chapter or sections were designed, they have decided one flow, right? The tariff schedule commodities products are arranged in the fixed pattern, and that pattern I have already discussed with you. It is decided in increasing degree of manufacturing of the commodities, right? It starts with the natural product, then the raw material, then the semi-finished goods, and then the fully manufactured goods, article and machinery. So it starts with the natural product, then raw material, then semi-finished goods, and then fully manufactured goods or article or machinery. So if you see this, I'll go back to that slide once again. If you see this sequence, right? It starts with the animal products, then vegetable products, so this is the pattern, right? Where the natural product comes first, then the raw material, then the semi-finished goods, and then the fully manufactured goods, articles or machinery, etc. So this is how they have grouped the various classes of goods under the Customs Tariff Act. And again, not only in Customs Tariff Act, because Customs Tariff Act is based on the harmonized system of nomenclature. Now, one more important aspect which we require to understand is the dash system. This is known as general explanatory note, right? Whenever you are doing classification, again and again, I am repeating, you require to remember 4 important aspects. Okay, पहला important aspect होता है rules of classification, which we are going to deliberate in next slide. तो पहला aspect रहता है classification में, वो है rules of classification, right? दूसरा important aspect है section and chapter note. तीसरा important aspect है this general explanatory note. Okay, and चौथा important aspect है explanatory notes which are given under the HSM. Right? You require to remember these 4 aspects when you will do the classification. So let's understand what is the general explanatory note. Okay, this is popularly known as dash system. Dash system is nothing but the sub-classification of principal commodity, right? Whenever you will see the tariff, for example, this is the heading number 7318. Okay, screw bolts, nuts, coach screw. This is known as description. Okay, this is description of this particular heading. Okay, or you can call it as a terms of heading, right? Immediately after terms of heading, you will find that here different types of dashes are there. This is single dash,
this is double dash, this is triple dash, right? Again double dash, again double dash, again double dash. So what is the meaning of this dash system? How this is relevant? Why this is important? Okay, let's understand. Single dash at the beginning of the description of any article in the tariff indicates the group, right? So single dash indicates the group, correct? So for example, in this case, this is regarding screw bolts, okay? तो screw bolt में उन्होंने पहला ग्रुप कर दिया है threaded article. So first group is threaded article. So whenever you will find the single dash denotes the heading of group of that particular commodity, right? So in this case, threaded article is the group. So single dash signifies or indicates the group of article. Two dash at the beginning of indicates the subgroup, right? So when you will see this two dash, it is the subgroup of immediately preceding single dash. तो सिंगल डैश था थ्रेडेड आर्टिकल, उसका सब ग्रुप है कोच ग्रुप. Okay, now immediately that after that you will find three dash. Okay, now 3 digit is subgroup of this coach screw, correct? So single digit is the group of commodity, 2 dash is the subgroup, right? 3 dash or 4 dash quadruplicate dash indicates the sub classification of immediately preceding description of the article, right? So single dash at the beginning of the description of any article in tariff indicates the group, while 2 dash at the beginning of indicates a subgroup. The single dash indicates the primary classification of the article covered by the heading, while double dash is the sub classification of the preceding article which has the single dash, right? So this is product classification, right? Single dash indicates the group, double dash indicates the subgroup of the immediately single dash group, and 3 dash or 4 dash indicates the subgroup of the immediately preceding single dash or double dash, correct? Now methodology of classification of goods. How we should do the classification? Whenever you are doing classification, you require to keep certain things ready with you, right? What are those things? First, commercial identity of the product in market. What is the name of this particular product in the market? Unless you know this, it is very difficult, because in many cases, classification is not possible based on the rules of interpretation, based on the dash system, based on the HS explanatory notes. In that case, you're required to see what is the commercial identity of this particular product. And based on the commercial identity only, you can classify those goods. So whenever you will do the classification, the first and foremost important aspect which you require to note while doing the classification is the commercial identity of that particular product. What are the functions of product? What are the functions of the product? Then what is the end use of the product? What are the main ingredients used in the product? Details of the manufacturing process. Is it finished product or semi-finished product? Description which is mentioned on the document such as the invoice. And whether it is complete product or part of any other product. So these are the primary things which you require to keep ready before doing the classification, right? Many times, for example, one of the aspects which I have covered here is the details of the manufacturing process, right? So say you have long tube, long pipe, you have just cut that pipe into small sizes. Will it change the classification, or classification will remain same, right? And that is why you require to understand the manufacturing process also. In many cases, we have seen that people are saying that ki excise chala gaya. I mean, manufacturing concept is not so relevant. But no, even today also, the concept of manufacturing is very much relevant. After cutting the pipes into different sizes,
Whether there is change in the name of product, product remains same. Even if you are cutting that product, even if you are cutting pipe into different sizes, it will not make any changes in the product. It will be recognized as a pipe only. So your classification will remain same. In many cases, you will find that, particularly in pipe industry, there is one process called hardening. Okay, where at particular temperature, pipes are heated, right? Now, why pipes are heated? Just to give the strength to that pipe. Now, again, will it make any change as far as product name is concerned? As far as functions are concerned? Answer is no. Right? And that is why even today also, the concept of manufacturing is very much relevant, particularly when you are doing the classification of that particular goods. Rules of interpretation. Rules of interpretation. As I mentioned, classification of goods is based on 4 aspects. और उसमें सबसे पहला एस्पेक्ट आता है रूल्स फॉर इंटरप्रिटेशन. आपको ये रूल्स जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज द प्राइमरी क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ओनली. Right? Whenever you will do the rules of interpretation, whenever you will do this exercise, then only you will see the section note, then only you will see the chapter notes, right? Then you will see the dash system, and finally you will see the HS clarificatory notes, which are provided under the harmonized systems of nomenclature. So let's understand these rules of interpretation. Total 6 rules are there. You're required to use these rules sequentially. Meaning thereby, you will use rule 1 first, then rule 2, rule 3, rule 4, and rule 5, and rule 6. You cannot directly jump to rule 6. You're required to go you're required to follow this sequence, right? Dekho, classification of goods in this schedule shall be governed by the following principle, right? Rule 1, classification to be as per terms of heading and section or chapter notes. Rule 1 क्या बोलता है? How you will do the classification? You will do the classification as per the terms of heading. Okay, जो भी आपका terms रहेगा, heading का जो भी term रहेगा, based on that terminology, you will classify the goods. Right? So what is this terms of heading? देखो, अभी हमने देखा था screw, bolt, nut, screw, screw. This is known as terms of heading. This is known as terms of heading. तो आप क्लासिफिकेशन जब भी करोगे, पहला बेसिस क्या होगा? The first rule says that your classification will be based on this terms of heading. This is based on terms of heading. Right? आपको ये terms of heading देखना पड़ेगा, उसके बेसिस पे आपको क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा. Correct? So the title of section, chapter and sub-chapters are provided for the ease of reference only. Right? For the legal purpose, classification shall be determined according to the terms of heading and any relative section or chapter notes. Okay. Chapter number दिया है, section का नाम दिया है, that is irrelevant. What is irrelevant is the terms of heading. तो पहला rule क्या बोलता है? How you will do the classification? Classification will be done on the basis of terms of heading. Now, it is not possible to prescribe the terms of heading in each and every case. So, whenever you are not able to apply rule 1 for the classification, in that case, you will go to rule number 2. Rule number 2 क्या बोलता है? Reference in heading to an article to include certain references. Rule 2 क्या बोलता है? Reference in heading to an article to include certain references. Rule 2A, reference to an article to includes reference to that article incomplete or unfinished or unassembled or disassembled. Rule 2A बोलता है reference to an article to includes reference of incomplete or unfinished or unassembled or disassembled articles. Any reference in heading to an article shall be taken to include a reference to that article incomplete or unfinished.
क्या बोलता है रूल 2A कि आपका रेफरेंस ऑफ आर्टिकल इंक्लूड्स रेफरेंस ऑफ इनकम्प्लीट आर्टिकल ऑल्सो. So it includes both finished and unfinished product. For example, this is chassis of motor vehicle, okay, fitted with engine, correct? This is not the finished form of your motor vehicle, but still according to this rule 2A, it will be classified as the motor vehicle under chapter number 87. Even if it is not finished, even if it is unfinished, okay, it will be classified as the motor vehicle under the chapter heading, under the chapter number 87. Right? So reference of article includes reference of incomplete or unfinished article. Okay. अगर आपने साइकिल को टायर्स नहीं लगाया है तो भी इट विल बी क्लासिफाइड एज द साइकिल ओनली. ओके. अगर आपने मोटर व्हीकल को टायर्स में बिठाया है तो भी इट विल बी क्लासिफाइड एज द मोटर व्हीकल अंडर द चैप्टर नंबर 87. Because rule 2A says that reference to an article includes reference of incomplete article or unfinished article. So even if it is not complete or even if it is not finished, it will be classifiable as if it is the finished product. So this is rule 2A. Rule 2B क्या बोलता है? Reference to material or substance to include reference to mixture or combination of that material. Any reference in heading to a material or substance shall taken to include a reference to mixture or combination of that material or substance with the other material or substance. Many times we have seen that we are mixing two material with each other. Correct? So in that case, reference of that particular material also includes a reference of mixture or combination of that material or substance with the other material. आप सबने गोल्ड देखा होगा. हम जब गोल्ड ज्वेलरी लेते हैं, this says that it is 99.99% pure. Why it is 99.99% pure? Because they are also adding other metals into that article of gold. Right? So article of gold is mixed with other articles. Right? So in that case, the reference of goods or that material also includes the reference of mixed goods. So even if you are mixing the other metals into gold, still it will be categorized as the gold only. It will be treated as article of gold only. Correct? So any reference in heading to a material or substance shall be taken to include a reference to mixture or combination of that material or substance with other materials or substance. Any reference to goods of given material or substance shall be taken to include reference to goods consisting wholly or partly of such material. The classification of goods consisting more than one material or substance shall be according to the principle of rule 3. Right? So whenever there is mixture or there is combination of goods, it will be also classified into the heading of that main goods. So like in present case, we have seen that in article of goods, we are also mixing certain other metals. Correct? Even if you are mixing some other metals into the article of gold, still it will be called as an article of gold. But in case of gold, it is very simple to decide it is article of gold. Why? Because proportion of other metal is very small. It is not huge in number, right? When this proportion is more, say 50% is gold and 50% is silver, in that case, what will be the classification? Will it be called as an article of gold or will it be called as an article of silver? Right? So when there is mixture of more than two goods, right? In that case, you require to go for rule number 3. Okay. What rule 3 says? Classification of goods when goods classifiable under two or more headings.
Like in present case, one can say that this is article of gold. Other will say that this is article of silver. Okay. So how to do the classification? So in that case, rule 3A says that specific heading to prevail over the general heading. Specific heading to prevail over the general heading. तो rule 3A बोलता है कि even if it is mixture of goods, right? But if there is one specific heading, in that case, specific heading will prevail over the general heading. For example, VIP bag, it can be classified as the plastic article also, and there is specific entry called suitcase also, right? So suitcase is the specific heading, is a specific entry. So in that case, this specific entry of suitcase will prevail over the general entry, that is plastic article. Mango pulp. Okay, mango pulp is fall under HSN number 08045040, and there is another entry called HSN number 22029920, which is applicable in case of fruit pulp. Now prima facie, when you will see both these entries, you may say that ki fruit, mango is fruit, so it should go under the fruit pulp. But when specific entry of mango pulp is given, you require to classify that product under the HSN number 08045040 only. So always remember, in case of mixed, when goods are classifiable in two headings, in that case, specific heading will always prevail over the general heading. Rule 3B, classification as if goods consisted material or component which gives the essential characteristics. As I mentioned, in case of mixture of goods or composite goods having different material, in that case, there might be dilemma whether it is classifiable under HSN number A or HSN number B. And prima facie, we may see that both the headings are relevant. A भी relevant लग रहा है, B भी relevant लग रहा है. Like in case of हमने gold का देखा था कि 50% gold, 50% silver, correct? Or say 50% is gold, 30% is say silver, and 20% is some other metal. In that case, under which heading we should classify? So rule 3B says that in such case, you should classify goods into such heading which gives the essential characteristic of such goods. Okay, so as per rule 3B, classification is governed according to the essential characteristic. Essential characteristic of material. So like if there is 50% gold, 30% silver, and 20% is some other metal, in that case, if it is jewelry and it has the essential characteristic of gold, it will be classifiable under the heading of gold only, right? So as per rule 3B, classification is governed based on the essential characteristic of the material. What are the essential characteristic of the material? Right? One more example which I want to share with you is regarding rubber bush. Rubber bush, right? See, this is rubber bush where inner part is of rubber, this outer part and inner tube is of metal, correct? So in this case, whether it will be classifiable as the metal part or as the rubber bush. Is it a metal part or rubber bush? Now where it is used, this is known as rubber bushes, right? And this rubber bush are used
on the chassis of motor vehicle in order to absorb the vibration or in order to absorb the load. Right? Now, absorption of load is not the essential characteristic of metal. Absorption of load is the essential characteristic of rubber. Right? And that is why, according to this rule 3B, this particular commodity will be classified as the rubber bush and not as the metal part. Right? So rule 2B states that your classification will be based on essential characteristic of that particular commodity. Rule 3C. Rule 3C states that latter the better maxim. So even by using essential characteristic also, if you are unable to classify the goods, in that case, this latter the better maxim rule comes into the picture. It states that when goods cannot be classified by reference of 3A or 3B, in that case, you should classify the goods in that heading which occurs last in numeric order. तो आपके पास दो चैप्टर हेडिंग्स थे, राइट? वो दो चैप्टर हेडिंग में से जो भी लास्ट में आएगा, in that chapter heading you should classify your goods. This is known as latter the better maxim. When goods cannot be classified by the reference to A or B, they shall be classified under the heading which occurs last in numerical order among those which equally merit consideration. This rule is also known as latter the better maxim. For example, if a product can fall under 440690 and 440890, in that case 4408.90 comes latter in the numerical order, and that is why product will be classified in in the HSN number 4408.90. So this is rule number 3C. Rule 4. Rule 4 is Akin rule. Akin rule means goods will be classified into the similar or identical class of goods. Goods which cannot be classified in accordance with the above rule shall be classified under the heading appropriate to the goods to which they are most akin. Akin means what? Akin means similar. Right? So when rule 1 is not, application of rule 1 is not possible, application of rule 2 is not possible, application of rule 3 is not possible, in that case, you can go with rule 4. And rule 4 says that classify the goods under the heading of such goods which are most akin to your goods, which are more identical to your goods. But when you are using this akin rule concept, you require to understand the concept of identical goods. Identical goods means the goods are similar with each other. And if they are not similar with each other in terms of quantity, in terms of value, in that case, it cannot be called as a akin goods. We cannot compare two-wheeler with the truck. It cannot be called as the akin goods. Okay. So whenever you are applying this principle of akin rule, in that case, you require to apply that logic on the identical goods, which are similar in nature. Right? So these are the 4 important rules which are usually or normally used in the classification of goods. Apart from these 4 rules, there are 2 more rules, rule number 5 and rule number 6, which are called as the additional rules. Right? These additional rules are applicable in case of packing material.
in many cases, for example, whenever we are purchasing, say jewelry, say necklace, in that case, Goldsmith provides us one specific case. Or say when you are purchasing camera, there is one specific camera case. In case of gun, in case of musical instrument, specific case is given along with that particular goods. In that case, according to rule 5A, that case will be classifiable under the heading of main goods. Now why? Because that case is principally designed or mainly designed to store that particular goods. We cannot use, say, camera case to store some other goods, or say case of any particular instrument to store some other goods. Okay, so it is specific case which has the specific application which is useful specifically in that case only, for that goods only, right? So in that case, it will be classifiable under the heading of that particular goods. Sometimes you will find that specific packing material is manufactured by the manufacturer to pack particular goods. For example, say packing material used to pack television, right? Which is specific, which is used only for packing of that particular goods. In that case also, according to rule 5B, such goods, such packing material will be classifiable with the parent goods for which that packing material is manufactured. Rule 6, which is the last rule in case of classification of goods. Rule 6 is used for the comparison. But Rule 6 says whenever you want to make the comparison of subheadings, such comparison must be done at the subheading level only, within the same heading, and you cannot compare subheading of one heading with the subheading of some other heading. That is what Rule 6 says, right? So these are the 6 set of rules which are very important for the purpose of classification. Now, another important issue which normally come before us is the classification of parts and accessories. And here मीटिंग खत्म हो जाएगी. Difference between the parts and accessories. What is parts and what is accessories? Parts is something which is essential, whereas accessory is optional. So say in case of motor vehicle, machine or tires are parts without which that motor vehicle cannot run or cannot operate. Whereas mirrors, even if you are not fitting mirrors, even if it is statutorily mandated, but even if you are not fitting the mirrors, it will not have any problem with the operation of that particular vehicle, right? So parts are always essential, whereas accessories are optional. And this question of classification of parts, you will see mostly in case of machinery, electrical equipment, vehicle, instrument. In that case only, this classification of parts and accessories will arise.
Normally, whenever if you see the section note or chapter note, it provides the coverage for the classification of parts. Normally, classification of parts of any particular machinery or vehicle is done within the same chapter. So say chapter 87 is regarding vehicles. Okay. So parts of vehicles are classified under chapter number 87 only. Right. So normally you'll see that ki section note and chapter note provides the coverage for parts and accessories. It provides the coverage for classification of parts and accessories. Right. In electro steel casting versus Commissioner of Central Excise, what is part is defined. Part is component whose absence will disable a machine or appliance. It must be regarded as essential ingredient or part of that machine. So as I mentioned earlier, what is part? It is the essential thing without which that machine cannot function. Now similar definition was also given in Commissioner of Central Excise versus Insulation of Electricals. Now when we are looking at these parts and accessories, there are two types of parts and accessories. First is parts which are general in nature or which is of general use, and second, parts which are of specific use. Okay, so for example, we know nut bolts, screw, washer. These are the general use parts. So in that case, normally these general use items are excluded from the definition of parts and machinery, parts and accessories. And in that case, they are classified in their parent HSN only. For example, in case of washer, even if you are using washer as the part of say motor vehicle, it will never classify under the chapter heading number 8708. It will go to chapter number 73 as articles of iron and steel, because it is parts of general use. And if you see the section note to chapter number to section number 16 or section number 18, it states that parts of general use will be classified under the main heading of that particular goods and not as the parts of that particular motor vehicle or machinery. Now, one more important aspect regarding parts and accessories. Part of part is also part of whole. For example, tire is part of cycle and valve is part of tire, and therefore valve will be also treated as the part of cycle. Right? So part of part is also part of the main goods. A component of machine is component of the machine. So even subcomponents or subparts will be also treated as the parts of the main component. Right? So part of part is also part of the main machine. One of the important aspects regarding classification is the trade parlance theory. Now, what this trade parlance theory says? Trade parlance theory says that whenever you are doing the classification, what is the trade meaning of that particular goods? What is the trade meaning? So sometimes it is not possible to use the section note, chapter notes or classification rules. In that case, you require to do the classification according to the trade parlance theory. Right? The trade parlance theory or the trade meaning should be given the due importance unless the tariff itself requires that the term should be interpreted in the strict technical sense. This is what the clarified
by the CBIC in their customs manual. So when expression is not defined in Act, in Customs Tariff Act, in the HS explanatory notes, in that case, what is the commercial meaning or what is the trade name of that particular goods is required to be understood in order to do the classification of that particular goods. Now, beyond trade parlance, many times even trade parlance or trade name of that particular commodity is not known. In that case, you require to use the dictionary meaning or you require to use the technical meaning in order to do the classification of that particular goods. Now, can we use a reference of Wikipedia or Google? In many cases, presently we have seen that people are using Wikipedia or Google as the source for classification of goods. Is it allowed? Is it possible to do the classification by using Wikipedia or Google? So this issue has already been deliberated by Supreme Court in certain cases. In Ponds India versus CIT, the Honorable Supreme Court has held that Wikipedia is external aid of the construction of statute. It may be looked into for gathering of information, but is not an authentic source. Similar ruling was given in case of HP India Sales versus Commissioner of Customs, wherein it was stated that Wikipedia is treasure of knowledge, but is based on the crowd sources and user-generated editing model. It is not completely dependable. So you can use Wikipedia or Google for the purpose of reference. But in both these judgments, Supreme Court has deliberated that it is not the authentic source for the purpose of classification. So you should not solely take the decision based on the text which is available on the internet. Classification should be based on the principles of classification rules. First, section note and chapter note. Second, third, dash system, sub-classification category of those goods. And fourth, which is very important, is the HS explanatory notes. Now, what is this HS explanatory notes? As I mentioned, when we see the tariff or when we see the tariff entry, the meanings are not given under the Customs Tariff Act, right? For example, let me share one more file with you. For example, this is extract of chapter number 73. Okay, articles of iron or steel, right? So 7318, screw, bolt, nuts, coach, screw, hooks, right? उसमें लिखा है threaded articles. But what is threaded article? It is not defined under the chapter number 73. Or say, if you come to chapter number 87, what is chapter number 87? Chapter number 87 is regarding vehicle other than railway or tramway. Okay, तो मोटर व्हीकल से रिलेटेड चैप्टर हेडिंग है और उसमें अगर आप 8708 में आते हो तो इट सेज दैट पार्ट्स एंड एक्सेसरीज ऑफ मोटर व्हीकल. Now, what is part and accessories? That is not defined under the Customs Tariff Act. In that case, you require to refer HS explanatory notes. What is this HS explanatory notes? I mentioned harmonized system of nomenclature is developed by World Customs Organization. WCO ने
हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर डिफाइन किया है, जिसपे उन्होंने ऑलमोस्ट 5000 कमोडिटीज का 6 डिजिट लेवल पे क्लासिफिकेशन किया है। एंड आफ्टर द एंड ऑफ एवरी हेडिंग they have prescribed the meaning of that particular heading, कि पार्ट्स एंड एक्सेसरीज में क्या कवर होता है, ये उन्होंने उसमें ये उन्होंने उसमें डिफाइन करके रखा है, राइट। तो whenever you will do the classification, you should see this HS explanatory notes, okay। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको और एक फाइल शेयर करता हूं जिसमें आपको HS एक्सप्लेनेटरी नोट्स कैसी रहती है वो दिखाएंगे। सी दिस इज द सेक्शन 17 ऑफ हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। मैंने आपको बताया था कि हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर इज 6 डिजिट क्लासिफिकेशन। देखो इधर 6 डिजिट पे ही क्लासिफिकेशन किया है, करेक्ट। सो दिस इज रिगार्डिंग 8708 पार्ट्स एंड एक्सेसरीज ऑफ मोटर व्हीकल, राइट। अभी इसके अगर एंड में आप आते हो तो उसमें उन्होंने मीनिंग दिया है, ओके। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्ट्स एंड एक्सेसरीज? दिस हेडिंग कवर्स पार्ट्स एंड एक्सेसरीज ऑफ मोटर व्हीकल of heading 8701 to 8705, provided the parts and accessory fulfill the both conditions, okay, they must be identifiable as being suitable for use solely or principally with the above mentioned vehicle, and they must not be excluded by the provisions of notes to section 17, see corresponding general explanatory notes। तो इधर उन्होंने बोला है कि what is parts and accessories, उसका मीनिंग इधर उन्होंने डिफाइन करके दिया, right? So whenever you will do the classification, 4 प्रिंसिपल्स आपको ध्यान में रखने हैं, 4 थिंग्स। पहला चीज आपको ध्यान में रखना है कि व्हाट इज द एक्सप्लेनेटरी नोट, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन रूल। क्लासिफिकेशन रूल क्या बोल रहा है वो आपको सबसे पहले जानना है। दूसरा चीज आपको क्या जानना है, दूसरा चीज आपको ध्यान में रखना है सेक्शन नोट एंड चैप्टर नोट। सेक्शन नोट एंड चैप्टर नोट में कुछ अलग चीज दी है क्या वो आपको देखना है। तीसरी चीज आपको देखना है डैश सिस्टम, करेक्ट, कि डैश सिस्टम क्या बोलती है। एंड चौथा सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, दैट इज एक्सप्लेनेटरी नोट्स प्रोवाइडेड बाय द WCO। तो WCO ने हर एक चीज के केस में एक्सप्लेनेटरी नोट डिफाइन की है, जिसमें वो पर्टिकुलर एंट्री का कवरेज उन्होंने डिफाइन किया है, right? So based on that coverage only you should do the classification, right? So explanatory notes by the words custom organization is also very essential and very important. अभी burden of classification is on department। अगर डिपार्टमेंट अगर कोई क्लासिफिकेशन की क्वेरी निकालता है, सपोज यू हैव क्लासिफाइड इन से 18%, but department is saying that it is under 28%, so burden of proof is on department to prove that whatever classification they have done is correct, and this was decided by the Supreme Court in the case of Hindustan Ferrero Limited versus Commissioner of Central Excise। So whenever department is raising any query as far as classification of goods is concerned, onus is on department to prove that the classification done by the assessee is incorrect and classification done by the department is correct, right? So burden of proof in case of classification is on the department. Now these are few real life example which now we will see. This is the screw hook, right? So as I mentioned again and again, whenever you are doing the classification, please remember the 4 principle। पहला प्रिंसिपल है कि आप क्लासिफिकेशन के रूल्स क्या बोलते हैं वो देखो। तो क्लासिफिकेशन का सबसे पहले वाला रूल बोलता है कि क्लासिफिकेशन शुड बी अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ हेडिंग, राइट। तो टर्म्स ऑफ हेडिंग आप जब देखते हो, इफ यू सी चैप्टर नंबर 73
तो चैप्टर नंबर 73 में there is specific entry for the screw hooks, right? हमने वो चैप्टर देखा भी था. See, screw, chapter number 73, heading number 7318, we states that screw, bolt, nuts, coach screw, correct? And there are two subcategories. One is threaded article and second is non-threaded article, correct? So in this case, जो हमने screw देखा था, it is threaded screw, right? So it will go into the subcategories. अभी इधर subcategories है coach screw, machine screw, other wood screw, screw hooks and screw rings. Okay, so we have seen screw hooks and rings. Specific entry has 7318. So it will go under the chapter heading number 7318. Right? Now, in case of motor vehicle for the transport of 10 or more person, again you will find that there is specific entry under chapter number 87. If you see chapter number 8702, in that case, there is specific entry for the vehicle. Now this is the vehicle for transportation of people having the capacity more than 13 people. Okay, so it will go to chapter heading number 8702 under the sub category of 2011. Next is rubber bush. Again, chapter number 40 specifically cover, if you see chapter number 4016, okay, heading number 4016, there is specific entry on the rubber bush, right? So in that case, it will be classifiable under the heading of rubber bush. This is the gearbox. Chapter number 8708 is provided for parts of the motor vehicle. So gearbox is the part of motor vehicle, so it will go under the heading of chapter number 8708. Even if you open chapter number 8708, then you will find that there is specific entry called gearbox. Okay, so when there is specific entry, you require to classify that particular goods in that category only. So 8708400 is the HSN number in case of gearbox. Similarly, in case of car door also, it is the part of your motor vehicle, so it will go under the chapter number 8708 only. Washer, we have already seen washer. This is the general item. Okay, so it will go under chapter number 73, which is articles of iron and steel. This is rubber bush. Now this rubber bush is particularly used in case of motor vehicle. As I mentioned, it is fitted on the chassis, right, to absorb the vibration, right? So in that case, there are two options. Either it will go under the chapter heading number 8708 as a parts of motor vehicle, or it will go as the metal part, or it will go as the article of rubber. Now, when we are looking at this particular part, primary question whether it will go into the metal part or rubber part. So in that case, you require to apply rule number 3B. Essential characteristic क्या है? So in this case, this is used for the absorption, and when it is used for the absorption of load or absorption of vibration is not the essential characteristic of metal, it is the essential characteristic of rubber. So even if it is mixture of metal and rubber, still it will be called as a rubber bush only and not as the article of any metal. Now second thing, whether it will go then under the chapter heading number 4017 as the rubber part, or under chapter heading number 8708 as the motor vehicle part. So in that case, if you see the section note to chapter to this section or chapter note
to chapter number 87, it says that articles of vulcanized rubber are excluded from the definition of parts and accessories of motor vehicle. So meaning thereby, this will be classified or this will be classifiable under chapter number 4016 as parts of motor vehicle, as the article of vulcanized rubber. So this will be called as a rubber bush and not as the parts of motor vehicle. So these are some of the real life examples, okay, which may be useful to do the classification in the present case. So again, I am repeating, there are 4 important principles which you should remember while doing the classification. First is the classification rules, right? You're required to use this classification rules sequentially, starting from rule 1 to rule 6. Okay, you cannot jump in between rule 1, 2, 3, 4. So you're required to use it in numerical order. Second important aspect you required to see is section note and chapter notes. Third important aspect, you required to use the general explanatory notes, which is also known as the dash system. And last but very important, you also required to see the explanatory notes which are provided under the harmonized system of nomenclature, which is defined by the WCO, which will define the coverage of any particular entry. Right? So with this, I conclude my presentation. Thank you very much, all of you, for your patientful listening. And now I hand over once again to the organizer. Thank you very much, sir. Thank you very much. Highly obliged, sir. A beautiful session. And now I request Prithvi Asol साहब, या किसी क्वेश्चन हो पहले बात करना, बाद उसके बाद बात करेंगे. किसी क्वेश्चन हो इस बारे में, कोई सवाल हो किसी का इस बारे में? चलिए मैम, पीपीटी के लिए मैं रिक्वेस्ट कर लूंगा सर को. किसी का कोई सवाल है क्या? राकेश जी, कोई सवाल नहीं है? चेयरमैन साहब है? नमस्कार सर. नमस्कार सर. नमस्कार. आज तो सर पूरा बजट की चर्चाओं में ही लगा रहा है सर. बहुत अच्छा सेशन रहा है सर. बहुत अच्छे आज ये भी बहुत बड़े सेशन था. राकेश भाई, हाँ बोलिए आप. बहुत अच्छे स्पीकर है सर. आपकी जो इनकी सराहना की जाए इतना कम है सर. राकेश भाई बताइए, बोलिए. सर ये कह रहा था, बाकी चीजें तो सब ठीक थी. एक छोटी सी बात पूछनी थी, जो मोटर व्हीकल्स में सर जो ईवी व्हीकल्स होते हैं, उसमें सर क्या वो थोड़ा सा जो ईवी मोटर व्हीकल्स हैं उसमें जो जीएसटीएन का सर प्रोविजन है, क्या उसमें सर आईटीसी का बेनिफिट मिलता है या नहीं मिलता है? बस इतना जानना था. ईवी के केस में आईटीसी का बेनिफिट मींस टू हुम? अल्टीमेट कस्टमर. हाँ, अल्टीमेट कस्टमर जिसने परचेस किया है, तो परचेस सपोज कीजिए किसी फर्म ने अपने नाम पे आईटीसी ले रखी, किसी फर्म रजिस्टर्ड फर्म है. सर सेक्शन, सर प्लीज रेफर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 सब क्लॉज ए. ओके, इसमें स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया है कि इफ your capacity means passenger capacity, vehicle capacity is less than 13 passenger. Okay, in that case, even if you have purchased that motor vehicle for your business purpose, credit is not allowed. There are 3 exceptions to this rule. इसके लिए 3 exception है. If you are dealing in motor vehicle only, meaning thereby you are purchasing motor vehicle and you are selling motor vehicle, in that case credit is allowed. Okay. दूसरा, if you are driving school, in that case also you are eligible to avail the input tax credit. And तीसरा, if you are providing any services by way of renting of motor vehicle, okay, in that case also you are eligible for the credit. Except these 3 exception, in all other cases, whether you are using that motor vehicle during the course or furtherance of your business or not, credit is not available. ड्राइविंग अब स्कूल में से स्कूल पे जो बच्चों को लाने ले जाने के लिए जो लोग अपने यूज करते हैं उसके लिए सर. करेक्ट. ड्राइविंग स्कूल मींस who are imparting the driving skill, जो ड्राइविंग सिखाते हैं. मोटर ड्राइविंग स्कूल्स रहते हैं ना. अच्छा, मोटर ड्राइविंग स्कूल. ओ आई सी. अच्छा, जो ड्राइविंग, in that case they are eligible for the input tax credit. प्रोप्राइटर अगर अपने पर्पस से लेता है ऑफिस आने जाने के लिए या कोर्ट आने जाने के लिए, still credit is not available. Still credit is not available.
according to section 17(5)(a). थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। और किसी को सवाल हो? शैल्या मैडम, कोई सवाल है आपका इस बारे में? Even general question other than classifications also we can take. हाँ, कोई भी सवाल हो जीएसटी के बारे में? सर एक और पूछ सकता हूँ? हाँ, पूछ लीजिए। सर अभी आज का ही एक मैटर था सर, जो ये थोड़ा इससे हट के पूछ रहा हूँ, जो सेक्शन 128A सर लागू हुआ है, उसमें जैसे इन लोगों ने जो ऑर्डर, सर पूछ सकता हूँ सर? हाँ, एमनेस्टी स्कीम ना, पूछ सकता हूँ? हाँ, नो प्रॉब्लम सर। उसमें एक्चुअली क्या है, जैसे इन लोगों ने सेक्शन 73 में ऑर्डर जो असिस्टिंग ऑफिसर ने पास कर दिए हैं, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि सर टैक्स, इंटरेस्ट और पेनाल्टी तीनों लगा रखी है, और जैसे 17, 18, 19 और 19, 21 तीनों के लिए दे रखा था। इनिशियल ईयर्स में कंफर्म ही नहीं था कब ऑर्डर कर दिया, कब मिल गया, सारी चीजें थी उसमें। सिर्फ मुझे इतना पूछना था कि जैसे इसका जो बेनिफिट है सेक्शन 128A का, जैसे किसी फर्म ओनर ने अपना एग्जैक्टली सेल और परचेज का बाइफिकेशन बना रखा और उसके अकॉर्डिंगली उसने टैक्स जमा करना चाहा, तो ये टैक्स मैं आपको जमा करके आपको इंटीमेट कर देता हूँ, और तो अल्टीमेटली इंटरेस्ट और पेनाल्टी तो वे आपको करेंगे। क्या सर टैक्स के मैटर में भी कुछ क्वेश्चन खड़ा करेंगे क्या वो? देखो, this amnesty scheme is different than what amnesty scheme we have seen earlier. Okay, like in case of service tax, आपने सबका विकास SVLDRS करके एक स्कीम थी, ओके, जिसमें उन्होंने बोला था कि 25% आप भर दो और क्लोज कर दो। ओके, दिस इज डिफरेंट। ओके, 128A क्या बोलता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको 31 मार्च 2025 तक आपको टैक्स पेमेंट करना है। सो वॉट एवर डिमांड दे हैव रेज्ड इन द शो कॉज नोटिस और इन द ऑर्डर, यू रिक्वायर्ड टू मेक द पेमेंट ऑफ दैट अमाउंट। ओके, बेसिक अमाउंट, टैक्स अमाउंट। ओके, अदर देन रिफंड वाला, इसमें रिफंड वाला मामला कंसिडर नहीं किया गया है। आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट द टैक्स अमाउंट। ओके, तो पहला चीज है 73 के अंडर नोटिस होनी चाहिए या ऑर्डर 73 के अंडर पास होनी चाहिए। दूसरा एस्पेक्ट है 31 मार्च 2025 तक आपको उसका बेसिक टैक्स पेमेंट करना है, बराबर। ये दो चीजें होने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, यू रिक्वायर्ड टू फाइल एप्लीकेशन फॉर वेवर ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी इन फॉर्म SPL 02। SPL 02 में आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फाइल करना है। ओके, now once you file the application along with the requisite documents, it will go to the proper officer. It will go to the proper officer. Now who is proper officer in this case? ये केस में प्रॉपर ऑफिसर कौन होगा? देखो, अगर शो कॉज नोटिस लेवल पे ही आप SPL 01 फाइल कर रहे हो, तो इन दैट केस एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, जो आपका, जिसने आपका मैटर सुनना है, दैट विल बी द प्रॉपर ऑफिसर टू टेक द एक्शन ऑन दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन। अगर आपका ऑलरेडी ऑर्डर पास हो चुका है, ओके, इन दैट केस सेक्शन 79 में जो रिकवरी ऑफिसर है, जो आपका टैक्स रिकवर करने वाला है, ही विल बी द प्रॉपर ऑफिसर। नाउ व्हाट विल बी द रोल ऑफ दिस ऑफिसर? दे विल वेरीफाई योर एप्लीकेशन। ओके, दे विल सी दैट वेदर योर डिमांड इज विदिन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 128A। अगर वो सेक्शन 128 के कवरेज में बैठता है, then only he will accept your application. Okay, if it is not falling under section 128A, तो वो आपको शो कॉज नोटिस देगा। Okay, for which within a period of 1 month you required to reply. Okay, अभी आपने उसको रिप्लाई देने के बाद, if it is satisfactory, if he is of the opinion that yes, taxpayer ने correctly apply किया था, तो in that case he will grant you that particular benefit. ओके, अगर उसको लगता है कि नहीं, इसने गलती से अप्लाई किया है, देन ही विल पास द रिजेक्शन ऑर्डर। ओके, इन दैट केस आइदर यू कैन विड्रॉ दैट एप्लीकेशन एंड यू कैन गो विद द रेगुलर अपील मोड, और यू कैन मेक द अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ दैट प्रॉपर ऑफिसर स्टेटिंग दैट आई एम एलिजिबल फॉर द एमनेस्टी स्कीम। सर 90 डेज क्रॉस करने के बाद भी अपील हो सकता है? इसमें तो टाइम बीत जाएगा, 90 डेज तो कवर ऑलरेडी। नहीं, देखो
अगर शोकॉज नोटिस लेवल पे अगर आपने एप्लीकेशन किया होगा SPL 01 में, जी बराबर, क्या आपको शोकॉज नोटिस आई है? जी ऑर्डर पास नहीं हुआ है अभी तक? ऐसा सिनारियो बहुत कम है, क्योंकि 19-20 तक तो सारे शोकॉज नोटिस 73 वाले तो खत्म हो गए। हाँ, ऐसा हुआ नहीं है। तो SPL 01 का एप्लीकेबिलिटी बहुत कम केसेस में होगा। जी तो दूसरा ही आएगा आपका SPL 2। SPL 2 कौन से केस में एप्लीकेबल है? व्हेन ऑर्डर इज पास्ड। पास्ट, हाँ, यस, ऑर्डर इज पास्ट। पास्ड, बराबर। अभी ऑर्डर पास होने के बाद आपने अपील फाइल किया था 90 दिनों के अंदर अंदर। नहीं सर, नहीं फाइल, अपील फाइल नहीं किया आपने? नहीं, इन्होंने मना कर दिया कि अपील नहीं फाइल करना, आप सीधे 128 का उस समय प्रोविजन हो रहा था कि 128 आने अब आ जाएगा, तो 128 में आपके एक्चुअल जो टैक्स है वो जमा करके आप अपने को रिलीफ पा सकते हैं। लेकिन अब तो देखो, इफ बिफोर फाइलिंग एप्लीकेशन अगर आपका अपील का पीरियड खत्म हो गया है, जी ओके, इन दैट केस यू कैन नॉट, मींस इफ एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड बाय द ऑफिसर, इन दैट केस आपके पास एक ही ऑप्शन रहता है, टू पे ऑफ दैट लाइबिलिटी, फुल लाइबिलिटी। ओके, इसलिए हमने सारे केसेस में यही किया कि इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर वी आर गोइंग अंडर 128A और नॉट, हमने अपील फाइल कर दी। अपील फाइल कर दिया। ओके, क्यों किया? क्योंकि अपील सेक्शन 128A के अंडर में जब एप्लीकेशन कर रहा हूं, अगर वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है, ओके, तो मेरा जो ओरिजिनल अपील था वो रिस्टेट हो जाएगा। हाँ, वो सस्टेंड करेगा, वो सस्टेन करेगा। इसलिए इट इज ऑलवेज बेटर, इवन उसके बियॉन्ड में आपको जाके बोलता हूं, उसके बियॉन्ड क्या होता है, इन माय केस पर्टिकुलरली मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपीलेट अथॉरिटी के पास जाके मैटर डेलिब्रेट कर रहा हूं और उनको बोल रहा हूं कि मैं DRC 03 से पेमेंट कर देता हूं, बेसिक टैक्स पेमेंट खत्म हो जाएगा, यू जस्ट पास ऑर्डर ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। जी, जब अपीलेट अथॉरिटी बेसिक टैक्स की डिमांड 0 कर देता है, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी रहता है, तो जो प्रॉपर ऑफिसर है उसको ज्यादा बारीकी में जानने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज अपीलेट अथॉरिटी ने ऑलरेडी बोल दिया है कि टैक्स डिमांड 0 हो गई है, आई एम चेसिंग ओनली फॉर द इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। दिस इज द सेफेस्ट वे। वैसे केस में क्या सर, ये जबरदस्ती टैक्स जमा करवाएंगे उससे, ये पार्टी से? ऐसे केसेस में क्या करेंगे नहीं, बिकॉज इन दैट केस आपका अपील पीरियड तो खत्म हो गया, तो 79 इन्वोक हो जाता है, फिर रिकवरी आपका 3 महीने के बाद शुरू हो जाएगा, 4 महीने के बाद। रिलीफ के लिए वो कहीं जा सकता है? कोई ऐसा कोई ऑप्शन है जहां वो व्यक्ति अपने आप को प्रेजेंट कर सकता है कि सर मेरे को एक्चुअली मेरा परचेज सेल ये है, एक्चुअली कैलकुलेशन ये है, मेरे को टैक्स इन्होंने, ठीक है उसने सर गलत हो गया उससे, तो कोई ऐसा कोर्ट है जहां वो जा सकता है कि रिलीफ के लिए एप्लीकेशन दे सकता है? 2 ऑप्शन है इधर, 2 ऑप्शन है। एक तो SPL 02 में आप जब एप्लीकेशन करते हो, वो जब रिजेक्ट होता है तो उसका जो अपीलेट मैकेनिज्म है वो आगे आगे जाएगा। ओके, कि आफ्टर दैट यू विल गो बिफोर द अपीलेट अथॉरिटी। अगर अपीलेट अथॉरिटी भी आपके अगेंस्ट देता है तो यू विल गो बिफोर द ट्रिब्यूनल। ओके, वो रूट तो है वो केस में। ओके, तो यू कैन गो बाय दैट रूट। ओके, अदरवाइज रिट रेमेडी तो आपके पास अवेलेबल है जी। ओके, बट sustainable means whether it will be maintainable before the high court or not, that is another matter, because if factual things are there normally high court तो आप सब लोग तो आपको पता है कि in that case high court will not take into consideration such matter. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और किसी को सवाल हो? मैं एक पूछना। जी मैडम बोलिए। सर, जैसे हम लोगों ने DRC 03 टैक्स जमा कर दिया है और DRC 03A नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उन्होंने ना तो एक्नॉलेज किया DRC 03 को, और हमने टाइम के बाद में किया है, असेसमेंट के बाद हमने जमा किया है 30 डेज के बाद, तो वो उसमें रेफरेंस नंबर ही जनरेट नहीं किया, ARN तो जनरेट किया, और रेफरेंस नंबर के बिना GSTR 3A नहीं हो पा रहा है। तो उस केस में हम क्या करें कि उनको बोले कि वो एक्नॉलेज कर दें उसको? नहीं मैडम, आपने यू मीन टू से दैट कि आपकी जो डिमांड थी, ओके, हमने जमा कर दी, वो आपने पेड कर दिया थ्रू DRC 03? जी जी, बराबर ना? और आपकी ऑनलाइन ऑर्डर है या ऑफलाइन ऑर्डर है? ऑनलाइन ऑर्डर है। ऑनलाइन ऑर्डर है, तो यू रिक्वायर्ड टू फाइल DRC 03A। ओके, बट नहीं फाइल हो पा रही सर।
क्योंकि क्यों वो नहीं हो पाएगा? रेफरेंस नंबर मांगता है 3A के लिए, ARN नहीं मांगता। अब आपके पास डिमांड आईडी है ना? डिमांड आपके पास आईडी है, डिमांड आईडी डिमांड है? आईडी से भी नहीं ले रहा, नहीं 3A नहीं ले नहीं, रहा डिमांड आईडी से। देयर आर टू ऑप्शंस मैडम। ओके, पहला ऑप्शन रहता है आपके सामने, ऊपर आपको ऑर्डर सिलेक्ट करनी पड़ती है, जी। बराबर? तो वो ऑर्डर का तो उधर आपको डायरेक्टली ड्रॉप डाउन आ जाएगा कि कौन से ऑर्डर के अगेंस्ट आप फाइल कर हाँ, रहे हैं, डेट और वो सब आ जाता है। बराबर? उसके बाद नीचे आप जब आओगे तो आपको DRC03 का रेफरेंस देना है। तो आपके पास DRC03 अगर आपने भरा है तो उसका ARN नंबर होगा, बेस्ड ऑन दैट उसका रेफरेंस नंबर होगा। GST के 03 का ARN नंबर है, बट रेफरेंस नंबर नहीं है। आपके NA पास कर रखा है DRC रेफरेंस नंबर पे। आपके पास DRC03 है? यस, 3 है, एंड उसका रेफरेंस नंबर ARN जनरेट हुआ है, एंड अधिकारी ने भी उसको एक्नॉलेज नहीं किया है अभी तक, स्टिल पेंडिंग है उनके पोर्टल पर। एक मिनट। हर्ष सर, जी कैन आई शेयर माई स्क्रीन? जी सर, बिल्कुल कर सकते हैं। 2 मिनट रुको मैडम, मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ हाउ टू डू इन दिस केस। दो मिनट दो मुझे सिर्फ। कैन यू एबल टू सी माई स्क्रीन? यस यस सर, यस। ओके, ना देखो मैंने मेरे एक SCC का लॉगिन किया है। ओके, तो अभी आप डैशबोर्ड पे आते हो तो दिस इज आवर GST पोर्टल। हम सर्विसेज पे जाएंगे। यस सर। अंडर यूजर सर्विसेज, इन यूजर सर्विसेज माय एप्लीकेशन, एप्लीकेशन, यस। अभी इधर आप जाते हो तो 3A के लिए एडजस्टमेंट ऑफ पेमेंट मेड थ्रू DRC03A, बराबर? मैं न्यू एप्लीकेशन बोलता हूँ। जी। नाउ हियर दिख रहा है DRC? जी सर, दिख रहा है। हाँ, यहाँ पे भी NA है रेफरेंस नंबर का। यस, बराबर। तो जी सर। आ गया?
ऐसा बट मेरे में नहीं आ पा रहा। Okay, और here there is option for the हाँ, ये order. आपने ARN नंबर ही आपने डाला एंड इट इज विजिबल नाउ, बट इन Yes, माय yes. केस देयर इज नॉट विजिबल। तो you can share your screen, आप देख सकते हैं। सर मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मुझे इतना नहीं आता है। मैं No कर रही हूँ problem, वर्किंग no problem, no problem. वर्किंग बट आई एम नॉट सो एक्सपर्ट। But that is possible, means बहुत बार क्या होता है, हम कॉपी पेस्ट करते वक्त एक आधा स्पेस भी अगर बीच में आ गया ना, तो भी यस इट सर, में हैपन दैट कि सिस्टम इज आई नॉट आई विल ट्राई माय बेस्ट हाँ, बिकॉज अभी हम आज नहीं अपनी शादी में क्या देखते तो वो आपको बता देता, वो शेयर कर देता। पक्का पक्का, यस। आई एम बेस्ड ऑन माय सन ऑनलाइन वर्क ओके के लिए। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। मैं करूंगी सर, इसको करके कोशिश करूंगी रात को। पक्का पक्का। थैंक्स अ लॉट सर। और किसी भाई को सवाल हो? सर एक सवाल हमारा था, बोलिए बोलिए। था 9C के बारे में। सर 9C की एक फर्म मान लो 3 लाख की है, 1% की, और दूसरे फर्म है जो 3,50,000 की, मतलब 5 लाख से दोनों ऊपर हो रही है। प्रॉफिट एंड लॉस अलग अलग बना है, तो उसमें 9C में कैसा करना है सर? 5 करोड़ बोल रहे हैं ना, थ्री हाँ, थ्री फाइव करोड़ फाइव बोल रहे करोड़ हैं 5 करोड़, राइट। 5 करोड़। देखो, 9(9)C की एप्लीकेबिलिटी जब हम देखते हैं, जी even in under GST, when you are going for registration or filing of this GST or 9(9)C, it is based on the aggregate turnover. Okay, तो applicability आप जब भी डिसाइड करते हो, it is based on the all India turnover. So in this case, your स्टेट वाइज टर्नओवर और ब्रांच वाइज टर्नओवर इज लेस देन 5 करोड़, बराबर। दोनों भी जगह से 3 करोड़ या 3 करोड़, ऐसे दो अलग अलग हैं, बराबर। तो राइट। टर्नओवर विद इन स्टेट इज लेस देन 3 करोड़, बट एग्रीगेट टर्नओवर इज मोर देन 5 करोड़, बराबर। तो दोनों भी केस में आपको GSTR 9 भी भरना पड़ेगा, 9C भी भरना पड़ेगा, बराबर। अभी दोनों के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐसा हो सकता है कि आप एक ही बना रहे हो या अलग अलग बना रहे हो, बराबर। अलग अलग बना रहे हो तो वेरी गुड, कोई सवाल ही नहीं उठता है। अगर एक ही बना रहे हो तो अगर आप 9C के बाद जो इंस्ट्रक्शन दी है, ओके, इफ यू ओपन द फॉर्म GSTR 9 इन अंडर GST रूल्स, बराबर, तो उसके एंड में उन्होंने जो इंस्ट्रक्शन दिया है, वो इंस्ट्रक्शन में उन्होंने क्लियरली बताया है कि अगर आपके पास सेपरेट टर्नओवर नहीं है तो आपको ब्रांच वाइज या GSTN वाइज टर्नओवर आपको डिराइव करना पड़ेगा। Okay. Now, in present case, in your case, as you have rightly mentioned, you have separate P&L account, बराबर। तो इन दैट केस तुम्हारे उस ब्रांच का जो भी P&L अकाउंट रहेगा, उसका टर्नओवर आपका रिलेवेंट रहेगा फॉर द पर्पस ऑफ GSTR 9 एंड 9C। ओके, बट एप्लीकेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कंसोलिडेटेड टर्नओवर पकड़ना पड़ेगा। तो इन प्रेजेंट केस, इवन इफ टर्नओवर इज बिलो 5 करोड़, ओके, बट एग्रीगेट टर्नओवर इज मोर देन 5 करोड़, GSTR 9C इज एप्लीकेबल इन बोथ द केसेस। दोनों फर्म MP से मतलब बिलोंग करती Yes, है? yes, yes, yes. In both the cases, it is applicable. राइट, थैंक यू सर। पृथ्वी भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का वोट ऑफ थैंक्स आप करें। इसके बाद सबसे रिक्वेस्ट है, जितने भी डेलीगेट्स हैं कि अपनी सीट पे खड़े हो जाएंगे राष्ट्रगान के लिए। वोट ऑफ अभी सर, अभी नहीं, वोट ऑफ थैंक्स के बाद सर। राखी भाई, वोट ऑफ थैंक्स के बाद। को परेशान मत करो जी राखी जी। सभी वेबिनार में, हमारी इस वेबिनार के सुंदर से अधिवेशन में जो जो हमारे अधिवक्ता मित्र शामिल हुए हैं, सभी का मैं इस वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वेबिनार का हमारा समापन का समय आ चुका है। इसको कंक्लूड करते हुए आज हम हमारे वेबिनार के मुख्य वक्ता जो हैं सरस्वती पुत्र श्री दीपक जैन जी का हमारी ओर से, हमारे सभी अधिवक्ता मित्रों की ओर से तथा हमारी जो कार्यकारिणी उत्तर प्रदेश कर अधिवक्ता संगठन लखनऊ, नर्मदापुरम हरदा जिला टैक्स बार एसोसिएशन मध्य प्रदेश, टैक्स बार एसोसिएशन छतरपुर मध्य प्रदेश, हमारे सभी अधिवक्ता मित्र की ओर से दीपक जोशी जी, आपका बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से आभार, जो आपने आज हमें इस सुंदर से सब्जेक्ट पे बहुत बहुत इनलाइटन किया, हमारा मार्गदर्शन बढ़ाया। उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, सब्जेक्ट तो बहुत सुंदर था आपका। वास्तव में जो हमने सीखा वो हमारे जीवन के लिए बहुत यूजफुल होगा। ऐसी हमारे शर्मा सर कभी आपको और बुलाएंगे तो जरूर कृपया बनाए रखिएगा।
धन्यवाद आपका। तो हमारा दुर्भाग्य था कि एनी टाइम पता ही नहीं, इस टॉपिक के बारे में पता ही नहीं हम लोगों को। आज 7 साल हो गए पढ़ा GST पढ़ते पढ़ते। क्यों राकेश जी, गलत बात कर रहा हूँ? बिल्कुल सही सर, बहुत बहुत बढ़िया सर। 8 साल हो गए GST को, 8 साल चल रहा है। इस टॉपिक के बारे में कभी दिमाग में नहीं आया किसी वकील के। जी बिल्कुल सर, बहुत अच्छी चीज है। मतलब सर वैल्यूएबल this is going to sir next litigation will be you will find that next round of litigation will be based on the classification only because आज तक महाराष्ट्र में पर्टिकुलरली हम देखते हैं, इवन आई हैव अपीयर्ड बिफोर MP में भी मैं 2-3 जगह ऑलरेडी अपीयर हो चुका, सतना में आके गया हूँ, जबलपुर में आके गया हूँ। नोटिसेस हमने जो देखी है, इट इज सिस्टम कैलकुलेटेड नोटिसेस कि GSTR 2A और 1 में डिफरेंस है, 3B में इतना डिफरेंस है। अभी तक उन्होंने उतना कॉग्निजेंस नहीं डाला है क्लासिफिकेशन। ओके, दूसरी चीज और एक इसमें इंपॉर्टेंट ऐसा है कि सेंट्रल टैक्स पीपल, CGST पीपल, दे नो अबाउट द क्लासिफिकेशन एस्पेक्ट, बराबर। बट स्टेट वाले जो लोग हैं अभी तक उनको क्लासिफिकेशन के बारे में नॉलेज नहीं है। ओके, हमको लगता है कि दिस पीपल आर नॉट गेटिंग एनी ट्रेनिंग। ओके, बट इतना एग्रेसिवली बोथ CGST एंड SGST डिपार्टमेंट दे आर ट्रेनिंग टू देयर स्टाफ हाउ टू रीड बैलेंस शीट, हाउ टू डू द क्लासिफिकेशन, प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, इसके बारे में उनको अगर आप एकदम रिगरसली ट्रेनिंग दे आपको रहे देख लेंगे कहते हुए तो वो बिल्कुल करने लगेंगे ये सब चीजें, वो जानते हैं बट करते नहीं है वो लोग। हैं। यस दे नो ईच एंड एवरीथिंग बट करते नहीं है वो लोग। correct. So I personally find that कि in days to come classification will be the contentious issue और उस पे हमारे संगठन ने उस पे ध्यान देना चाहिए। और it is not so simple to conclude this particular aspect within one session from one speaker। मैं सभी जो कमिटी मेंबर्स है उनको दरख्वास्त करूंगा कि और ऐसे क्लासिफिकेशन पे हर एक, और इनफैक्ट सबसे सिंपल चीज जो हम दोहराते हैं, जो हम करते हैं कि आप एक कस्टम्स टैरिफ एक्ट परचेस कर लो। अगर परचेस करना पॉसिबल नहीं है तो CBIC के वेबसाइट पे आपको इंपोर्ट का टैरिफ मिल जाएगा, वो डाउनलोड करके रखो। और सुबह उठने के बाद शाम तक हमने जो भी गुड्स परचेज, जो भी गुड्स हमने यूज किए होंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम टूथब्रश एंड टूथपेस्ट, ओके, सबका लिस्ट बनाओ और उसका क्लासिफिकेशन करने को बैठो कि इसका HSN क्या होगा। ओके, दैट विल गिव यू द मोर इनसाइट rather than getting any inputs from any technical person। सर एक चीज और पूछ सकती हूँ, अभी जो अभी आया कि RCM with permission of committee members। सर जो RCM के लिए आया अभी कि RCM में हम लोग बिल रखेंगे एंड इवन हमें HSN भी उनके अलग से देने हैं, तो हाउ कैन इट पॉसिबल? समटाइम तो वो जो होते हैं जो किराना है या अदर थिंग्स हैं वो लोग तो छोटी छोटी चीजें, या जैसे हमारे कुछ व्यापारी वो फ्रेट कर देते हैं, सिर्फ फ्रेट के लिए HSN वो देते हैं RCM, तो उसके लिए कि फ्रेट वाला ही डाल दें उसका HSN। देखो, इन केस ऑफ RCM हर्जी विथ योर परमिशन बता दीजिए। नहीं मैडम बता दीजिए। ओके, देखो RCM 2 सेक्शन में बाइफरकेट किया है, सेक्शन 9(3) एंड सेक्शन 9(4). ओके, सेक्शन 9(3) इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, सेक्शन 9(4) इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन, बराबर। तो इफ यू आर प्रोक्योरिंग एनी सप्लाईज, ओके, फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन तो वो 9(3) में आता है, अनरजिस्टर्ड पर्सन से है तो 9(4) में आता है, बराबर। मोस्टली गुड्स के बारे में ज्यादा RCM एप्लीकेबल नहीं है। ओके, बहुत कम चीज, अगर आप नोटिफिकेशन नंबर 4/2017 देखते हो सेंट्रल टैक्स रेट, तो उसमें कैटेगरी ऑफ गुड्स दे दी है कि कौन से केस में गुड्स आप अगर परचेज, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, अगर आप सीमेंट परचेस करते हो एंड इफ योर ओवरऑल प्रपोर्शन इज लेस देन पर्टिकुलर परसेंटेज तो ही RCM एप्लीकेबल हो जाता है। मेनली RCM आपको एप्लीकेबल होगा सर्विसेज के केस, जैसे GST है, हम सब लोग, आप सब लोग एडवोकेट्स हो, तो एडवोकेट्स के केस में सर्विसेज गिवन बाय द एडवोकेट इज सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, बराबर। या स्पॉन्सरशिप सर्विसेज है, बहुत सारी सर्विसेज, रेंट कैब है, रेसिडेंशियल ड्वेलिंग है, कमर्शियल प्रॉपर्टी अगर आपने रेंट आउट की है तो उसके केस में RCM है। तो ये सारे केस में नॉर्मली पार्टीज अगर रजिस्टर्ड है तो वो खुद का इनवॉइस दे देगी और वो बेसिस पे ही आप क्रेडिट ले सकते हो, या वो बेसिस पे ही आपको RCM भरना है।
तो सपोज हम एक छोटा एग्जांपल लेते हैं कि गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी है, ओके, जीटीए है, जिसने आपको इनवॉइस दिया है, हु इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, ओके, तो वो अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो उसको जीएसटीआर 1 में दिखाना पड़ता है, उसको फ्लैग सिलेक्ट करना पड़ता है कि दिस इज अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, बराबर। वो आपके 2A में दिखेगा, आपके 2B में दिखेगा, एंड बेस्ड ऑन दैट एंट्री यू विल पे द जीएसटी, ओके। तो वो जो ट्रांसपोर्टर ने आपको इनवॉइस दिया है, इवन इफ उसने टैक्स पेड नहीं किया, आप टैक्स पेड कर रहे हो, तो भी आपको जो क्रेडिट मिलने वाला है, इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको जो मिलने वाला है, वो उसके इनवॉइस के बेसिस पे मिलने वाला है, बराबर। अभी दूसरी कैटेगरी कि मैं जीटीए सर्विस ही ले रहा हूं लेकिन वो अनरजिस्टर्ड है जीएसटी में, तो इन दैट केस सेक्शन 31 क्या बोलता है, आपको खुद को सेल्फ आरसीएम इनवॉइस जनरेट करना है, ओके। आप जब सेल्फ आरसीएम इनवॉइस जनरेट करोगे तो उसमें जो भी कंटेंट आएगा, ओके, तो सेक्शन 31 रीड विथ रूल रूल 43, ओके, उसमें रूल 43 में दिया है कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए इनवॉइस, तो वो सारी चीजें प्रॉपरली उसमें मेंशन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। तो उस केस में जो भी सैक कोड आप उसमें डालने वाले हो, वो सैक कोड प्रॉपरली डालना भी आपकी ही जिम्मेदारी है। उस केस में उसको प्रॉपरली क्लासिफाई करना इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत छोटी छोटी अमाउंट्स होती है हमारी, जैसे 5,000 रुपया, 20,000 रुपया, तो तब भी हमको बनाना है उसका Yes, बिल in बनाना that है। case also you're required to do that थैंक यू सर, particular थैंक task. यू, वेरी नाइस सर। प्रतिभा कंप्लीट करिए अपना। ठीक, धन्यवाद सर दीपक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वेबिनार की समापन की वेला को हम आगे बढ़ाते हुए हमारे वेबिनार के जो प्रथम सत्र के वक्ता है श्री अंकित गर्ग जी, हम उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे मित्रों की ओर से, हमारी ओर से, तथा समस्त अधिवक्ता व गण जो वेबिनार से जुड़े हैं उनकी ओर से। अंकित जी, आपका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका। इसके अलावा हम चाहेंगे हमारे संजय भटनागर जी का भी आभार व्यक्त करना चाहेंगे। शैलेश विश्वकर्मा जी का भी बहुत बहुत आभार, हमारे सत्र में जो शुरुआत में वो ओपनिंग करते हैं, थोड़ी सी डिटेल आपकी इससे जो वक्ता रहते हैं उनके प्रॉपरली बताते हैं। शैलेश जी, आपका बहुत बहुत आभार। हम और आगे बढ़ाते हुए इस कड़ी को हमारे वेबिनार के जनक हमारे शर्मा जी, हर्ष शर्मा जी, उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहेंगे। शर्मा जी, आप हमारे सभी मित्रों का बहुत ख्याल रखते हैं और समय से पहले आप बिल्कुल सचेत रहकर हमारे मार्गदर्शन के लिए कोई ना कोई नया भीरे दीपक जोशी जी जैसे लाते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा वेबिनार में सभी हमारे मित्र मंडली जो जुड़ी हुई अधिवक्तागण, मातृशक्ति और यूट्यूब वगैरह पर भी जो हमारे मित्रगण जुड़े हुए हैं अधिवक्तागण, उनका भी बहुत बहुत आभार ये करते हैं जिन्होंने आज बहुत धैर्य से हमारे दीपक जोशी जी का लेक्चर सुना। सभी मित्रों का बहुत बहुत आभार, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ हम चाहेंगे कि हमारी समापन की बेला की अंतिम कड़ी हमारे राष्ट्रगान से हम समाप्त करें, इसलिए सभी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और राष्ट्रगान में शामिल हों। राष्ट्रगान। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविण उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाये तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। सभी का बहुत बहुत भारत धन्यवाद। माता की जय हो। भारत माता की जय। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। थैंक यू दीपक सर, वंडरफुल टॉपिक, जिसके कभी Thank you, sir. हम अपने में भी Thank you. उम्मीद नहीं थी सर। 7 साल हो गए Thanks सर। for the opportunity.
एंड हर्ष जी, मैंने आपको व्हाट्सएप पे पीपीटी शेयर कर दिया है, सो यू कैन शेयर दैट पीपीटी विद अदर मेंबर्स आल्सो। जी जी सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, हाईली ऑब्लाइज सर। सर फिर बहुत जल्दी फिर एक बार आपसे रिक्वेस्ट करेंगे भी आगे इस पक्का टॉपिक पक्का पक्का। ओके।